Sign. The two teams that are going to be meeting each other today, the Spotlight Social Scorchers and the Spartans. From the Spotlight Social Scorchers, I have Mr. Abhishek Zaveri, who's going to be leading their side this evening. And from the Spartans, it's going to be Siddharth Chavda to be leading their side. I believe Abhishek Zaveri has the coin with him. No, it's Siddharth Chavda who has the coin with him. Siddharth is going to be spinning the coin. Tails is the call. Heads it is. So you won the toss. What do you want to be doing? We're going to bat first. Your reasons for that? We're a good batting side and we want to put a high total on the board and get them in pressure and see where it goes from there. What are you looking at? Somewhere close to 180, 200. Any changes in your lineup from the last match? That I don't know, but we'll know soon. I don't know as of now. Sanjeev is not there and someone else will replace. All the very best. Thank you. What would you have done? We would have fielded first. Okay, so you're getting what you wanted. Yeah, we're getting what we wanted. We assume, and there has been due conditions the last few matches, and so we thought it'll be better anyway to bowl first and then bat on wet conditions, which would be easier to bat on as well. They're looking at 180. 180 seems to be par for the ground, considering we're near the end of the season and mostly the wickets have become batting wickets. We have a very long batting lineup, so we would be ready to chase anywhere southward of 200. All the very best. Thank you very much. So, well, the news from the centre is that the Spartans have won the toss and they've elected to bat first. We start in 10 minutes. 6:40.
Very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Idfc First Bank Mca Bkc Members Premier League Season 3. We're coming to you live from the Somaya Cricket Ground out here in Sion. The two teams that are going to be meeting each other today, the Spotlight Social Scorchers and the Spartans. From the Spotlight Social Scorchers, I have Mr. Abhishek Zaveri, who's going to be leading their side this evening. And from the Spartans, it's going to be Siddharth Chavda to be leading their side. I believe Abhishek Zaveri has the coin with him. No, it's Siddharth Chavda who has the coin with him. Siddharth is going to be spinning the coin. Tails is the call. Heads it is. So you won the toss. What do you want to be doing? We're going to bat first. Your reasons for that? We're a good batting side and we want to put a high total on the board and get them in pressure and see what it goes. What are you looking at? Somewhere close to 180, 200. Any changes in your lineup from the last match? That I don't know. Sanjeev is but not we'll know soon. I don't know. Sanjeev is not there. Sanjeev is not there and someone else will replace. All the very best. Thank you. What would you have done? We would have fielded first. Okay, so you're getting what you want. Yeah, we're getting what we want. We assume, and there has been due conditions the last few matches, and so we thought it'll be better anyway to bowl first and then bat on wet conditions. It'll be easier to bat on as well. They're looking at 180. 180 seems to be par for the ground, considering we're near the end of the season and mostly the wickets have become batting wickets. We have a very long batting lineup, so we would be ready to chase any. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele
कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele.
कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele.
कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई, Very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the IDFC First Bank Mca Bkc Members Premier League Season 3. We're coming to you live from the Somaya Cricket Ground out here in Sion.
The Spartans taking on the Spotlight Social Scorchers. It was the Spartans, they won the toss, elected to bat first. To their misfortune, they've lost their opener in the form of Anand Thakkar straight away in the first over. Credit goes to Neeraj Bajaj for having picked up the wicket. So the Spotlight Social Scorchers have started off really well here. The score reads 4 for no loss. We're in the first over itself, and we have number 3 out there. I have my partner as well, Raju Bhai, with me, who will be taking proceedings in Hindi. So we're going to have a combo of English and Hindi in the commentary box. Welcome, Raju Bhai. शुक्रिया। मैं यहाँ पहली बार कमेंट्री दे रहा हूँ, मगर उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको खुश रखूँ और आपको पूरा आनंद दूँ इस मैच का। पहले विकेट के नुकसान पर स्कूल स्कोर हुआ है 4 रन और ये पहले ओवर में ही विकेट मिला। अच्छी शुरुआत और उम्मीद करता हूँ ये मैदान में आपको अच्छी मैच देखने मिलेगी। तो फील्ड का मुआवना करते हुए बैट्समैन चारों तरफ देखते हुए और ज़बरदस्त नज़ारा है इस मैदान का, एक खूबसूरत नज़ारा है। फील्ड सेटअप करते हुए बॉलर काफ़ी टाइम ले रहे हैं, मगर जरूरी है, क्रिकेट है, क्रिकेट अम्ब संभव का गेम है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इसे बैट्समैन ने कवर्स के तरफ मोड़ा है और दौड़कर 1 रन पूरा किया है। अब नए बैट्समैन आ रहे हैं, स्टांस ले रहे हैं अंपायर का। इसे स्टांस देखकर मुझे रिकी पॉन्टिंग की याद आती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो हमेशा चारों तरफ देखते हैं, फील्ड का मुआयना करते हैं। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट मारा है और गेम बाउंड्री लाइन के तरफ, ये मिड ऑन की तरफ जाती हुई साइड स्क्रीन की तरफ और दौड़कर बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया हुआ है। Vijay Singh getting off the mark straight away. The man in form has scored a couple of half centuries for his side, has looked really good in the tournament. He was shy of runs in the previous tournament that he was playing, the School Dads Cricket Championship, back down at Air India ground in Santa Cruz. But this tournament sees him firing on all cylinders here. First over has been bowled, 7 for 1 are the Spartans. Okay, Abhishek Zaveri, the captain today for the Spotlight Social Scorchers, with the ball in hand. Jitendra Diwan partnering with Vijay Singh here, batting at number 3. Has played a few crucial knocks for his side. They'll need a partnership here. They've lost Anand Thakkar first up. The good thing with Abhishek Zaveri is he's getting some swing here. He's taking the ball away from the right-hander. He's looking in very good touch with the ball here. Oh, swept away. We seldom see that. That's gone for 4, 1 bounce. Superbly struck there by Jitendra Diwan. Against the line of attack really, especially when you see the ball going away from the right-hander. You associate a batsman going through the offside. He's gone the other way. He's chose to sweep
sweep rather the fast bowler, the medium pace Abhishek Zaveri, which is never easy to do. क्या शॉट मारा बैट्समैन ने, एक टंपा बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये जबरदस्त बैटिंग करते हुए और फील्ड का मुआवना करते हुए बैट्समैन, थोड़ी सी खेल में रुकावट। अब अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर यहाँ पे, और ये जबरदस्त गेंद थी, बैट्समैन बीट हो गए, ये गेंद को समझ नहीं पाए और अच्छी गेंद बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा विश्वास बढ़ा होगा उनका, एक अच्छा शॉट मारा है कॉन्फिडेंस के साथ एक चौका मारने के बाद। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये छोड़ दिया बैट्समैन ने, ये अच्छी गेंद थी, ये डॉट बॉल है। खूबसूरत मैदान ये सोमैया का साइन में, और ज़बरदस्त माहौल क्रिकेट का। अगली गेंद और इससे फिर छोड़ दिया बैट्समैन ने, और ये ओवर की समाप्ति। इस ओवर के बाद कुल स्कोर हुआ है 11 रन, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 1 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर हुआ है 11 रन। कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ। और कुल स्कोर हुआ है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 2 गेंद के बाद। बॉलर फील्ड सजाते हुए आएंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद, और इसे बैट्समैन ने मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। बैट्समैन दौड़कर 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए पूरा किया है, और 2 रन के बाद कुल स्कोर हुआ है 13 रन। दौड़कर तेजी से दूसरा रन पूरा किया और कुल स्कोर हुआ है 13 रन। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत। क्रिकेट जबरदस्त गेंद, मैच का आनंद लेते हुए कमेंटेटर बॉक्स में। अगली गेंद राइट आर्म, और क्या शॉट मारा है कवर्स की तरफ, 4 रन। गेंद गोली की तरह मैदान के बाहर, जबरदस्त शॉट मारा है, गोली की तरफ मैदान के बाहर गई। ये शॉट देखकर मुझे याद आता है जैसे कि वीरेंद्र सहवाग शॉट मारते हैं। फिरोज शाह कोटला के ग्राउंड में कपिल देव ने ऐसे ही शॉट मारा था 1969-80 मैच में इकबाल कासिम की बॉलिंग में। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इसे फिर मोड़ दिया बैट्समैन ने स्क्वायर लेग की तरफ, और मिसफील्ड हुई वहां पर, और बैट्समैन ने दौड़कर भागकर दूसरा रन पूरा किया, और ये अंपायर का इशारा, 4 रन। तेज मैदान है और आउटफील्ड काफी तेज है। 4 रन के साथ कुल स्कोर हुआ 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और एक और गेंद है इस तीसरे ओवर में। 2 चौके लगाए हैं इस ओवर में। रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, इस रफ्तार को रोकना होगा बॉलर को। काफी रन दिए, काफी महंगा ओवर है उनका ये। अगली गेंद, और इसे उछाल दिया है बैट्समैन ने, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 रन पूरा किया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, और 2 बैट्समैन को 1 ही रन मिलेगा। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 22, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी जुड़ जाइए ना, IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट।
की पहली गेंद बैट्समैन ने उसे पुश किया है, गेंद पॉइंट की तरफ, कोई भी रन नहीं। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर हुए 3 रन 3 ओवर के बाद। और ये पहली गेंद में कोई भी रन नहीं। बैट्समैन फील्ड का मुआवना करते हुए और बॉलर सेट करते हुए अपनी फील्ड अप, बॉलर को इशारा करते हुए मिड ऑफ के प्लेयर की तरफ, और अब वो पुश कर रहे हैं डीप मिड ऑफ की तरफ प्लेयर को। उम्मीद करते हैं कि शॉट, लॉफ्टेड शॉट दे हुए टेम्प कर रहे हैं बैट्समैन को। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इसे पुश किया है पॉइंट की तरफ, थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई, और कोई भी रन नहीं। तो पहले 2 गेंद में एक भी रन नहीं आया। अच्छा ओवर डाल रहे हैं, काफी कंजूस ओवर डाल रहे हैं बैट्स बॉलर। अगली गेंद, ओहो जबरदस्त गेंद थी। बैट्समैन डबल माइंड में थे, आगे जाए या पीछे जाए बिल्कुल समझ नहीं पाए। गेंद एंड में गेंद को छोड़ दिया। अगली गेंद, और इसे बैट्समैन ने अच्छी फील्डिंग बॉलर की, गजब की फील्डिंग की है, कम से कम 1 रन रोका उन्होंने। तीन ओवर 4 गेंदों के बाद कुल स्कोर हुआ है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसे बैट्समैन ने ऊंचा चांस है आउट होने के लिए, बॉलर आ रहे हैं नीचे, उधर अच्छा पोजीशन, बॉलर आसान सा कैच छोड़ दिया है। ये क्या किया है, ये कैच आसान था, ना ही कोई धूप है ना कुछ गॉगल्स, या तो आप नाइट मैच खेल रहे हो। ये आसान सा कैच था, पोजीशन में आए थे, पोजीशन अच्छा किया, मगर पता नहीं क्या वजह थी कि वो कैच को नहीं पढ़ पाए। शायद थोड़े नर्वस हो गए, 2 फील्डर आए थे नजदीक से, मगर ये कैच नहीं पकड़ पाए। तेईस 1 विकेट के नुकसान पर तो मैच जबरदस्त होता हुआ है। एक आसान सा कैच छोड़ दिया है, अंपायर ने यहां पर इशारा करते हैं। अगली गेंद, बॉलर रेडी हो रहे हैं, वहां पे कैप्टन अपनी फील्ड सेटअप कर रहे हैं, छोटा सा रनअप है बॉलर का। अगली गेंद राइट आर्म, और इससे बैट्समैन ने बॉलर के बीच आउट, लेग बिफोर, तुरंत अंपायर ने हाथ ऊपर किया। ये दूसरे विकेट का नुकसान, दूसरा विकेट का पतंग गिरा हुआ है। कुल स्कोर हुआ है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और मैच में वापसी आ रही है। विजय सिंह डटे हैं मैदान पर, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। उनके कंधों पर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है। 23 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele. रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद विजय सिंह अब स्ट्राइक लेंगे। स्कोर रेट बढ़ाना होगा, रफ्तार बढ़ानी होगी, रन रेट बढ़ाना होगा। कुल स्कोर हुआ है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और आगे कहाँ कॉल देंगे इंग्लिश में।
Right, Vijay Singh on strike. 23 for 2. Couple of overs left in the power play. 11 balls to be precise. They've lost a couple of wickets here, have the Spartans. That is certainly going to play on the eventual total, because they haven't quite gotten off to the start that they would have wanted to have liked to have done so. But Vijay Singh, there he goes, big down the ground. Oh, there was a fieldsman right back there for that. Amit Kohli puts one down, in fact. Who expected a fieldsman right behind the bowler? This comes to us as a big surprise. I felt that ball was going for 4 or 6, one of the two for sure. But eventually it went to Amit Kohli and he put it down. Usually a very safe fielder, good cricketer is Amit Kohli. But this time round couldn't hold on to one. And Vijay Singh lives to fight another day. Nevertheless, he's still out there. Worked away by Siddharth Chavda, the captain for the Spartans today. Should pick up a couple of runs here. Vijay Singh is going to hold the key today for the Spartans. He's the man in form. Has scored runs in all the matches so far. One can expect him to carry on from here in the good vein of form that he finds himself in. Siddharth Chavda has just walked to the wicket, so he will take some time to settle in. Flicked away nonchalantly. He's coming back for the second here. Very good placement on that occasion. Siddharth away with a couple of runs. In fact, a couple of runs to him. That's why he's batting on 4 of 2 balls. Spotlight Social Scorchers would be very happy with the start that they've gotten. They've picked up a couple of wickets in the very first 5 overs itself, in the power play that is. Anand Thakkar, Jitendra Diwan, 2 big wickets to fall. That's why I say that year after, Vijay Singh has to take on the mantle of the responsibility of taking his team forward from here. A ball to come now in the 5th. You remember the Spartans, they won the toss, elected to bat first. They were very happy to do that. Both sides getting what they wanted to, because the Spotlight captain Abhishek Zaveri wanted to field. One bounce to the fieldsman in the deep at mid-wicket. Will be a single to complete the 5th. 29 for 2 are the Spartans. वह 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिद्धार्थ खेल रहे हैं 5 रन पर और विजय सिंह खेल रहे हैं 14 रन पर। 100 का स्ट्राइक रेट है विजय सिंह का और सिद्धार्थ ने 5 रन बनाए। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर, उनको रफ्तार बढ़ानी होगी रन्स की। बॉलिंग के लिए आ रहे हैं अभिषेक, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। अभिषेक जवेरी, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इससे बैट्समैन ने उछाल दिया है फील्ड में कैच, और ये आसान सा कैच था। कैचेस छूट रहे हैं, कैचेस छोड़ोगे तो मैच भी हाथ से छूट लोगे। कैचेस पकड़ने होंगे, ये नहीं, मैं समझता हूं ये तीसरा आसान सा कैच छोड़ा है। कैचेस छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। 31 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 1 की समाप्ति के बाद अभिषेक की अगली गेंद। अभिषेक, इसे बैट्समैन ने कवर्स की तरफ, और कोई भी रन नहीं, सुरक्षित तरीके से खेला, कोई भी रन नहीं। अच्छा शॉट था। काफी जिम्मेदारी है इस वक्त विजय सिंह और सिद्धार्थ के ऊपर। सिद्धार्थ खेल रहे हैं 7 रन पर, विजय सिंह खेल रहे हैं 14 रनों पर। फील्ड सेटअप करते हुए कुल स्कोर हुए 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक की अगली गेंद।
और इसे बैट्समैन ने मोड़ा है शॉट मिड ऑन की तरफ, आप कह सकते हैं इसे मिड ऑन की तरफ, और दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो 5 ओवर 3 रन की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभिषेक की गेंद, और इससे बैट्समैन ने पॉइंट की तरफ मोड़ा है, कोई भी रन नहीं। अच्छा ओवर डाल रहे हैं अभिषेक, जिन्होंने ये ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए। जिम्मेदारी है इन दोनों प्लेयर को एक अच्छा स्कोर खड़े करने के लिए। अभिषेक और इससे बैट्समैन ने घुमाया है मिड ऑन की तरफ, और बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा करने की। अब स्ट्राइक पर आए विजय सिंह, जिनके ऊपर दारोमदार है। विजय सिंह काफी एग्रेसिव बैट्समैन और एक जाने माने बल्लेबाज है। अभिषेक ये गेम, इससे बैट्समैन ने एक सॉफ्ट शॉट मारा है मिड ऑन की तरफ, कोई रन नहीं। तो कुल स्कोर हुआ है 32 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। So far, so good for the Spotlight Social Scorchers. They're doing a fabulous job here. Some pressure on the Spartans, but the good thing for them is that Vijay Singh is out there. He is the man to get the runs for them. He is the one to watch out for. Abhishek Zaveri. Is it? I think it looks like Bhaumik Vaidya who's coming into the attack. Left arm spinner. Bhaumik is a quality left arm spinner. He's picked up a few crucial wickets at crucial junctures for his side. Certainly a left arm spinner to look out for. It's going to be Siddharth Chavda on strike. Siddharth's done a decent job for his side so far. 8 of 9. Remember, they're 2 wickets down, so he can afford to take his time. Power play done and dusted with. Oh, pulled away. In style. Finds the fieldsman in the deep. Kyan Barucha, founder of Bayside Sports. This tournament is powered by Bayside Sports. Straight away in action. We've seen him keep wickets. Driven over cover for 4. That's exactly what Vijay Singh is known for. He can clear boundaries at any given time. You can see this in the shot as well. The confidence with which he played the shot was marvelous. The ball speeded away to the boundaries at the rate of knots. Superb stroke. Did that so nonchalantly, without any fuss. Moves on to 18 here, Vijay Singh. He's getting a move on here. Just getting into his own.
Pressure on Bhawmik Vaidya. 5 of the first 2 balls. Well bowled. Very good comeback on the stumps. Always a difficult ball to negotiate when a left arm spinner is bowling wicket to wicket. Previous delivery gave him some room and Vijay Singh latched onto it. Drives. Once again finds the boundary. Long off only had 5 to 10 meters to move to his left, but he had no chance whatsoever. The timing on this one was sublime. The placement even better. Long off is relatively straight. Now, if long off was in the normal long off position, this would have been stopped. But in this tournament, we've seen that captains prefer to keep the long off and the long on relatively straight. This time it came about to doing their undoing here. Couple of boundaries already in the over, which I think is starting to look better and better with every ball that he faces. Outside the line of the off stump, which I think expecting that to be given in his favour as a wide, but the umpire felt that it was inside the tram line. A ball to come now in the 7th. Well bowled. Terrific delivery from Bhawmik Vaidya to complete the 7th. 41 for 2 it will be, the Spartans. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। कुल स्कोर हुआ 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद राइट आर्म ओवर द विकेट, इसे बैट्समैन ने मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। थोड़ी तकलीफ हुई बैट्समैन को झुकने पर और दौड़कर बैट्समैन ने 1 रन फिर किया। विजय स्कून का कुल स्कोर हुआ है 22 रन 20 गेंदों पर। सिद्धार्थ खेल रहे हैं 10 रन पर 11 रन गेंदों के बाद। 7 ओवर 1 गेंद के बाद कुल स्कोर हुआ है 42 रन। स्पॉटलाइट 42 पे 2 नुकसान के नुकसान, और इसे बैट्समैन ने पॉइंट के ऊपर से उछाला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। आप तो जानते हो ऐसे शॉट मारने में 6 रन का इशारा अंपायर की तरफ से। जबरदस्त शॉट मारा हुआ है। ऑफ साइड के ऊपर शॉट ऊपर मारने में वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव फेमस खिलाड़ी हैं। हालांकि उनके हाथों में इतनी जबरदस्त ताकत होती है, और यही ताकत दिखाई है विजय सिंह ने। अगली गेंद इसे बैट्समैन ने पॉइंट की तरफ मारा है, और ये रन आउट। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही रोहित शर्मा और चेतेश्वर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और रोहित शर्मा ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया था क्योंकि चेतेश पुजारा अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे। यही हाल हुआ, जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग, मिक्सअप हो गई। तो तीसरे विकेट का पतंग उड़ा हुआ है 48-2 तीसरे विकेट के नुकसान के बाद, और ये जबरदस्त धक्का लगा हुआ है क्योंकि सेट बैट्समैन थे। 28 रन पर रन आउट हुए विजय सिंह। 48 3 विकेट के नुकसान पर। मैच जबरदस्त दिलचस्पी पर है। ये 20 ओवर का मैच है तो कम से कम 150 रन बनाने होंगे इस मैदान पर। आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है और यहाँ पर रन्स आसानी से बन जाते हैं। एक अच्छा डिसेंट स्कोर होगा 170-180 के आसपास, और इस वक्त कम से कम 7 रन की एवरेज चल रही है। तीसरे विकेट का पतंग, रन आउट तो एक सैक्रिफिसल हो जाता है, क्रिमिनल लॉस हो जाता है।
वहाँ फील्डर्स में गुफ्तगू, फील्ड सेटअप करते हुए। ये विकेट के बाद जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा स्पार्टन का, क्योंकि जबरदस्त फॉर्म पर खेल रहे थे विजय सिंह, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने पिछले ओवर में ही एक छक्का मारा था। तीन विकेट के नुकसान पर 48 रन 7 ओवर 3 गेंद की समाप्ति के बाद। अब नए बैट्समैन आए, आदित्य सिंह लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। सिद्धार्थ उससे कुछ बात करते हुए से समझा रहे हैं कि विकेट पे रहना है, हमारे कंधों पर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है और इस वक्त विकेट खोना एक सुसाइडल हो जाएगा, इसलिए आप विकेट बचा के रहिए और हमारी टीम को एक पोजीशन पर लाना है, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है। आदित्य सामना करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, अभिषेक की गेंद जा रही है मिड ऑन की तरफ, दौड़कर बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। 49 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए बैट्समैन आए, थोड़ी रन रेट पर आप उम्मीद कर सकते हो कि नया बैट्समैन आता है तो रन रेट गिर जाता है, मगर इनको रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी, रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी अगर मैच में रहना है तो। क्योंकि आजकल आप ये नहीं कह सकते हो कि 9वां 10वां 11 बैट्समैन है, एक टेल एंडर है, वो लोग लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी कमाल दिखाते हैं। क्या शॉट मारा है, इससे बैट्समैन ने मोड़ दिया है थर्ड मैन की तरफ, 1 रन के साथ अर्धशतक। स्पॉटलाइट ने 50 रन पूरे किए, स्पार्टन ने 50 रन पूरे किए 3 विकेट के नुकसान पर। अब 8वें ओवर की आखिरी गेंद, आदित्य देखते हुए फील्ड को, अच्छे बैट्समैन है, इन्होंने अपना खाता खोल चुका है। इसे बैट्समैन ने मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्कूल स्कोर हुआ है 51 8 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट के नुकसान पर, माफी चाहता हूं मैं। Right, so we have Amit Nair who is coming to the attack for the first time, bowling the 9th over here. Aditya Singh will be on strike, batting on a couple of runs. Aditya Singh, left-handed, so the left-hand right-hand combination will help the Spartans here. Worked away down towards fine leg for 4. That was played really fine in the end. Superb placement from Aditya Singh.
Straying on the pads that time round. Amit Nair paying a heavy price. Concedes a boundary. Important runs here for Aditya Singh and the Spartans. They're looking forward to a partnership here, the Spartans. They need Aditya Singh to combine with their captain Siddharth Chawda in order to get some runs on the board. Spartans have lost their main man Vijay Singh. The man in form unfortunately run out. Was a bit of a mix-up between him and Siddharth Chawda. Vijay Singh walked back. That was a big blow for the Spartans. Oh, well bowled. Much better delivery on the stumps. Leaving the left-hander. Gets a single. Now their standing captain Siddharth Chawda will be on strike. Spartans wanted to get 180-200 on the board. I think after the start that they've gotten 150-160, and they would take it any day, because it's going to take some doing here. Amit Nair to Siddharth Chawda. Off the back foot, will pick up a single. Mid wicket tidying up. This is the IDFC First Bank Mca Bkc Members Premier League Season 3. We're coming to you live from the Sion Somaya Cricket Ground here in Sion. Lovely setting. This ground under lights is a picturesque venue. Aditya Singh facing up. He's going to be spooning a catch to Amit Nair. Should have gone two hands at it. Chose to go one-handed. Was an absolute dolly, really. He should have gobbled that one. We can see what happened exactly. Okay, that was back live. We'll get you the replay after this ball. Yeah, now if we can play it. This is what happened. Looking to play that on the onside, getting the leading edge. Amit Nair had enough time to go with two hands. One can give him the benefit of the doubt only for the fact that it's never easy to take catches in your follow through, because he was going to his left, then had to turn to his right. That can be a bit tricky at times. Cut away. In the end, the gap for 4. Terrific strike. There were two men out there in the deep. One at deep extra cover and at deep point. It split the gap perfectly in the end. He hit it in front of square. That goes to show you that he picked up the length a lot more earlier than one would have done so. That's what made the boundary a special one. 62 for 3 after 9 are the Spartans. विकेट के नुकसान पर 62 9 ओवर की समाप्ति के बाद पिछले ओवर में 11 रन दिए अमित नायर ने, और सिद्धार्थ खेल रहे हैं इस वक्त 16 रन पर। और रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी अगर मैच में कहीं एक संयम स्कोर बनाना है। कम से कम इस मैदान पर, जो मैदान का एक नज़ारा है सायन के सोमैया ग्राउंड, कम से कम 160 रन बनाएंगे 8 की एवरेज से, तब कहीं जाके आप मैच में बने रहोगे। 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आ रहे हैं अमीश विजयक। अमीश विजयक ने रक्षात्मक फील्ड रखा हुआ है।
राइट आर्म राउंड द विकेट। इसे बैट्समैन ने घुमा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। ये अंपायर का इशारा, 6 रन। खराब गेंद थी, इसका बैट्समैन ने पूरा फायदा उठाया, घुमा दिया बैट्समैन ने। आप जानते हो ऐसे शॉट मारने में डेविड गौर, कार्सन गावरी काफी फेमस है प्लेयर। कैरी सोबर्स की क्या बात कहें, द टावरिंग प्लेयर जिन्होंने 8000 रन, 235 विकेट और 110 कैचेस पकड़े हैं 83 टेस्ट मैचेस में। सर गारफील्ड सोबर्स कहते हैं इसे। अमीश विजय पहले ही गेंद पर छक्का, थोड़े नर्वस होंगे कि क्या किया है, मगर उसे कम बैक करना होगा। अगली गेंद, इसे फिर बैट्समैन ने मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया है। कुल स्कोर हुआ है 69, 3 विकेट की नुकसान पर हम हाफ वे पर आ रहे हैं। ये आखिरी ओवर होगा, उसके बाद ड्रिंक्स मैदान पर आएगी। फील्ड सेटअप करते हुए अच्छा कमबैक किया है, सिर्फ 1 ही रन दिया दूसरी गेंद पर। अब स्ट्राइक पर है सिद्धार्थ, जिन्होंने बनाए हैं 16 रन। आदित्य खेल रहे हैं 15 रन पर। इन दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो चुकी है और इन्हें अच्छी साझेदारी बनानी होगी अगर मैच में रहना है तो। अगली गेंद विजय की, बीट किया है। स्टीयर करना चाहते थे, लेट कट मारना चाहते थे, मगर कांटेक्ट नहीं कर पाए। अनिश विजय की आगे है इसे, और ये कैच का चांस था, छोड़ दिया है। आसान कैच नहीं था, झुके मगर एंटीसिपेट नहीं कर पाए उसे। अब आ रहे हैं राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंड के सामने आ रहे हैं राउंड द विकेट। सिद्धार्थ सामना करेंगे। अगली गेंद इसे, और ये अपील कर रहे हैं नॉट आउट का अंपायर ने। 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब ये आखिरी गेंद होगी 10वें ओवर की। अच्छा कमबैक किया है। फील्डिंग साइड को, स्पॉटलाइट्स को रोकना होगा, रन्स को। अच्छी गेंद थी, इससे बैट्समैन ने पुश किया है, बॉलर्स बैक, कोई रन नहीं। तो 70 रन 10 विकेट के बाद, 10 ओवर के बाद 7 रन की औसत है। और अभी अंग्रेजी में देंगे आंखों देखा।
Right, Amit Nair to continue from the pavilion end. Bowling to the captain Siddharth Chawda. Will pick up a single here, will Siddharth. Spartans, although they've lost 3 wickets, they've managed to go at 7 runs per over. They'd want to up the ante going forward. Initially they were looking at 180, 200. They'd be happy for a score in between 150 to 170. But they're going to have to bat out their skins in order to get to that total. Aditya Singh 15 of 10, looking really good in the middle. Siddharth is playing more the supporting role to Aditya. I believe the captain Siddharth Chawda wants to anchor the innings. He needs to stay out there. Remember, Vijay Singh sacrificing his wicket. Well bowled, Amit. Superb delivery. Completely squaring him up. Ball pitched just outside the line of the off stump and left the left-hander. Never an easy ball to negotiate with. Outside edge this time. Waiting for the umpire signal on this one. It will go into the boundary for 4. Welcome runs for the Spartans. Moral victory to the bowler. But it will go in the kitty of the batsman as 4 runs. Was a really good delivery. Once again leaving the left hand after pitching. Aditya Singh has got a couple of outside edges, a few leading edges. But he's still out there, more importantly for his side. His side needs him to carry on here. What happened there? They're asking the question. They're convinced that they have their man. Aditya Singh is not moving. The umpire is now going to have a word with the leg umpire. But to be fair, he did not pick up anything, did the standing umpire. But now that the fielding side, the Spotlight Social Scorchers, have kept appealing, it's made the umpire go to the leg umpire. Not too sure if he can pick up something on the replay. Okay, was a slower delivery by the looks of it. Asking the question. Only they were convinced. Aditya Singh wasn't. He stood his ground. According to him, he hasn't nicked that. We'll have to wait and see what the umpire has to say. Remember, we have the services of our third umpire, Mr. Amit Dhirwani, in the house with us. They're taking their time, the umpires here. We'll soon have a decision. Right, they can come up to the third umpire. But they haven't done so as of now. They're still thinking over it. The more time they're taking, it will go mostly in the batsman's favour, because the benefit of the doubt will go to the batsman. As we can see, he's ruled in favour of the batsman. So Aditya Singh still is out there, batting on 19 of 13 balls. So far so good for Aditya. He was dropped by Amit Nair when Amit Nair was bowling from the other end. They're still having a go at the umpire. They think they had their man. They had no doubts whatsoever. They were convinced. Aditya Singh was wondering what they were appealing for, because according to him, he had not nicked it.
The leg umpire might have not heard anything, hence it went in favor of the batsman, because the standing umpire was in favor of the batsman right from the outset. Couple of balls to go in the 11th. Spartans 75 for 3. Right, Idfc Singh facing up. Amit Nayyar to Idfc Singh. Outside edge. There is third man this time round, so will only be a single. Right, brings the captain Siddharth Chawda to face the last ball of the 11th over. Spotlight Social Scorchers know that they have the lid on the scoring so far. "76 for 3. Bit of a partnership building up between these two. Partnership standing at 28 of 21 balls. 11 overs have been bowled. The score will remain at 76 for 3. The Spartans. Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API have successfully retained a strong clientele. कुल स्कोर हुआ है 76, 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद। बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं कप्तान सिद्धार्थ चावड़ा। उनके कंधों पर एक ज़बरदस्त जिम्मेदारी है। एक रन आउट हुआ है, एक जो ज़बरदस्त मशहूर बैट्समैन है विजय सिंह, उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया है। रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी स्पार्टन को, लगभग कम से कम 150 रन बनाने होंगे और इस वक्त रन रेट चल रहा है 7 का। 11 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आदित्य सिंह अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 20 रन पर फील्ड का मुआवना करते हुए। आदित्य सिंह के अगली गेम से आदित्य सिंह ने मोड़ा है मिड ऑन की तरफ, कोई भी रन नहीं। आदित्य सिंह चाहते हैं कि आज वो एक बड़ी पारी खेले, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी। इसे बैट्समैन ने घुमाया है और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और वहां पर रोका है फील्डर ने। दौड़कर बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। अच्छी फील्डिंग वहां पर। आदित्य सिंह 20 रन पर खेल रहे हैं, सिद्धार्थ चावड़ा 18 रन पर।
फील्ड सेटअप करते हुए। से बैट्समैन ने मोड़ा है मिड ऑन की तरफ और ये वहां पर फील्डर का, इधर अंपायर का इशारा, अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। निश्चित ही 3 रन रोके वहां पर फील्डर ने। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। आप जानते हैं वो पोजीशन पर विराट कोहली फील्डिंग करते हैं ओडीआई में और T20 में। अगली गेंद इससे बैट्समैन ने उछाला है और ये गेंद जा रही है कवच के ऊपर से, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। और बॉलर्स बैक आ रही है विकेट की तरफ, बॉलर्स की तरफ। 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 79, 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। स्पार्ट 79, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फुल टॉस और इससे बैट्समैन ने उछाला है, फायदा नहीं उठा पाई इस गेंद का और सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अच्छा मौका था बैट्समैन को चौका छक्का मारने का, लेकिन नहीं, उसका फायदा नहीं उठा पाए। 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आदित्य खेल रहे 22 रन 17 रन की बॉलों में 22 रन और इसे फिर बैट्समैन ने घुमा है, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं वहां पर। आदित्य सिंह खेल रहे हैं 23 रन पर 18 गेंदों में और कप्तान सिद्धार्थ चावड़ा। स्पार्टन का स्कूल है 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Amit Nair to Aditya Singh. Oh, he slam bammed that through the offside. And waiting for the umpire signal on this one. It's gone all the way for 6. That is a terrific strike from Aditya Singh. Never an easy shot to play. Did get hold of that. Was closer to the bottom of the bat. But it still went the distance. Wonderfully struck by Aditya Singh. He is finding his feet out here at the Somaya cricket ground here in Sion. This time he swings through the onside. Completely mistimes that one. Will be a dot. But they've started off well here. लीजिए आप।
Oh, he swung that one on the onside this time. And the ball's crossed the ropes once again. A couple of maximums here to Aditya Singh. He is opening his shoulders out here at the Somaiya cricket ground. That is a wonderful stroke because he got stuck into that one. Oh yes, he is coming into his own, and he's coming into his own pretty quickly here. They're getting the runs now, the Spartans, thanks to Aditya Singh. Seems to be motoring along really well here. He is seeing the ball really well out there. Is Aditya Singh. These are good signs for the Spartans. On the other hand, ominous signs for Spotlight Social Scorchers. Aditya's quickly moved on to 35 here of just 22 balls. Just goes to show you how well he's seeing the ball out there. Slower one attempted. This is in the air. Chance. Drops it. He almost got there to the fieldsman at mid-wicket, but he could not hold on to that one. I'm not too sure whether he got fingertips on the ball, but was a chance that's gone a-begging. It went high up into the night sky. Never easy to judge these catches. One would have expected him to take it, but Aditya Singh is still out there, gets a life. Choosing to go for the third big one, Aditya Singh. Needs to be careful that he can't afford to get carried away here. Right, a ball to go now in the 13th. Siddharth Chawda, the captain, facing up. Well bowled. Very well bowled, Amit. Beating Siddharth comprehensively on that occasion. 13 overs have been bowled. 94 for 3 are the Spartans. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। तो 3 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर हुआ है 94 रन। विजय सिंह की भरपाई करते हुए आदित्य सिंह, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 छक्के मारे, मगर वो बाल बचे, उनका एक आसान सा कैच छूट गया था। हालांकि कैच पकड़ना इतना आसान नहीं है इस मैदान पर, क्योंकि लाइट्स के नीचे यहाँ पर कैच पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा अजहरुद्दीन जैसा गजब फील्डर भी पॉइंट पर साउथ अफ्रीका में कैच नहीं पकड़ पाए। यही हाल है इस सोमैया के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पर। कुल स्कोर हुआ है 94। 3 विकेट के नुकसान पर आदित्य सिंह खेल रहे हैं 36 रन पर, और कप्तान सिद्धार्थ चावड़ा खेल रहे हैं 20 रन पर। छियालीस रन की पार्टनरशिप हुई है। 33 गेंदों पर आप कह सकते हो ये 140 का स्ट्राइक रेट है। 33 गेंदों पर 46 रन, और ये पार्टनरशिप खतरनाक साबित हो रही है। स्पॉटलाइट को कुछ ना कुछ तो करना होगा, उन्हें डेस्परेट है विकेट निकालने पर। पिछले ओवर में एक आसान सा कैच छूट गया। आदित्य सिंह खेल रहे हैं 36 रन पर, भरपाई कर रहे हैं। विजय सिंह की खतरनाक साबित हो रहे हैं, और ये अगर फील्ड में रह गए 2-3 ओवर तो आप उम्मीद करते हैं कि स्पार्टन 180 के आसपास पहुंच जाएगा। फील्ड में थोड़ी सी रुकावट, समझ नहीं पा रहे कहां फील्ड सेटअप करें। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं खतरनाक साबित हो रहे हैं। आदित्य सिंह 36 रन पर खेल रहे हैं। ये फिर बैट्समैन ने घुमाया है, और ये गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, नहीं रोक पाए, और 4 रन। बिल्कुल नहीं रोक पाए, गेंद गोली की तरह मैदान के बाहर। आदित्य सिंह पहुंच गए 40 रन पर, धीरे धीरे अपने अर्धशतक पर पहुंच रहे हैं। अर्धशतक सोमैया ग्राउंड पे मारना यानी कि 100 रन के बराबर है।
कुल स्कोर हुआ है इस वक्त 98, 3 विकेट के नुकसान पर। वैद्य अपनी अगली गेंद पर, इसे बैट्समैन ने स्ट्रेट ड्राइव किया है, जिसे किंग ऑफ ड्राइव्स कहते हैं। बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 99, 3 विकेट के नुकसान पर। स्पार्टन अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए अच्छी गेंद खेल रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप हो गई है। 99 रन, 3 विकेट नुकसान पर आदित्य सिंह खेल रहे हैं 40 रन 24 गेंदों पर, और कप्तान खेल रहे हैं 20 रन पर। कप्तान को भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी अगर इस मैच में 160 170 रन पहुंचाने होंगे तो। अगली गेंद, और ये अपील करेंगे, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। स्पॉटलाइट को विकेट लेनी होगी, इस मैच में रहना है तो, क्योंकि ये पार्टनरशिप जबरदस्त खतरनाक हो रही है। 2-3 ओवर खेल गए तो रनों की रफ्तार और बढ़ जाएगी। इसे स्क्वायर कट किया है पॉइंट की तरफ, और बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरे किए, और ये तालियों की घड़घड़ाहट, 100 रन पूरे किए। एक रक्षात्मक स्कोर की तरफ स्पार्टन 13 ओवर 4 गेंदों पे 100 रन पूरे किए। 41 रन पर खेल रहे हैं आदित्य सिंह, कप्तान सिद्धार्थ चावड़ा खेल रहे हैं 21 रन पर। धीरे धीरे आदित्य नजदीक आ रहे हैं अपने अर्धशतक की तरफ। इसे हैमर किया है बैट्समैन ने सिर्फ 1 रन के लिए। इसे आप कैसे थे, जैसे कि बेसबॉल शॉट मारा। जबरदस्त मैदान का नजारा, खूबसूरत लाइट साइन के सोमया ग्राउंड पर। 101 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस की तरह हाफ वॉली थी और बैट्समैन ने इसे स्ट्रेट मारा है, बॉलर्स बैक, 1 रन। पिछले ओवर में, इस ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 100 रन, 2 रन, 3 विकेट नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। Okay, so we have Kaustav Ganguly, who's come into the attack, bowling around the wicket here, getting the outer half of the bat, will go for 4. There were 2 fieldsmen out there in the deep, one at deep extra cover and one at deep point. Split the gap perfectly. Neither one of them got close eventually. Siddharth Chawda getting a boundary alongside his name. Needed these runs. He's been kept quiet for quite some time now. Much better delivery. Well bowled. Will pick up a single, I believe, though. Yes, he does pick up a single here.
5 runs of the first 2 balls. Does put a lot of pressure on the bowler straight away, because this can prove to being an 8-run, 10-run and over, and that's what they need from here to the Spartans. They would be looking to at least get a minimum of 8 to 10 runs every over from here. Anything above that will always be a bonus. Aditya Singh facing up. Pulled away. That is a mighty heave for 6. Shades of Yuvraj Singh in that shot. The timing on that one was crisp. Oh yes, Aditya Singh. 3rd maximum for him. If I'm not wrong, that is. He got hold of that one really well, did Aditya. Kaustav Ganguly is proving expensive here. He's already gone for 11 runs in the first 4 balls. Aditya Singh batting on 48 of just 28 balls. Has accelerated really well in this innings. Has provided them with the impetus that they were looking out for. Pulls again. Not too sure if he's timed this one. Guess what? Even better. It's gone out of the ground this time round. Superb stroke from Aditya Singh. Gets to his half century in style. 54 to be precise of just 29 balls. Fine knock from Aditya Singh. Under pressure. Came after the fall of Vijay Singh's wicket. And he is reaping the rewards of some exquisite batting from the left-handed Aditya Singh. Not making them feel the pressure after Vijay Singh having gotten out. He's taken on the responsibility beautifully thereafter as Aditya Singh. What a knock so far from the left-hander. This is a very good innings so far. One can expect him to use the long handle hereafter, because he's looking really good out there. He is seeing the ball like a football at the moment. Right, last ball of the over. 17 runs so far of the over. You can expect Aditya Singh to try and look for another big one here, because he's taking a liking to the bowling of Kaustav Ganguly. This time the short 3rd man. A little to his left or his right. That was for 4 again. 18 runs coming of the 15th. 119 for 3 are the Spartans with 5 overs to come. Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele. क्या कमेंट्री दी है इंग्लिश में जर्विस ने, ज़बरदस्त कमेंट्री दी है। उन्होंने पिछले ओवर में बताया कि 5 छक्के मारे हैं और 5 छक्कों मारने के बाद अर्धशतक पूरा किया। और मैंने कहा कि बैट्समैन काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं और रन रेट बढ़ता हुआ इस वक्त स्कोर हुआ है 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के बाद। सिद्धार्थ चावड़ा थोड़े धीरे खेल रहे हैं, 27 रन उनका स्ट्राइक रेट है 100 के आसपास, मगर आदित्य सिंह 54 रन 30 गेंदों पर ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है। और उन्होंने कुछ शॉट युवराज सिंह की तरह मारे, 2 शॉट फाइन लेग के ऊपर से, स्क्वायर लेग के ऊपर से, 2 छक्के पिछले ओवर में। और ये प्लेयर
सिंगल आउट रहेगा। इस मैच का अंतर इस तरफ उधर जाएगा, ये एक प्लेयर रहेगा। दोनों टीम पर एक प्लेयर इंडिविजुअल जो आउट एंड आउट ग्रेट परफॉर्मेंस दे रहेंगे वो रहेंगे आदित्य सिंह। सिद्धार्थ कप्तान की पारी खेलते हुए, इसे बैट्समैन ने बोलर्स बैक मारा है, सिद्धार्थ ने कोई रन नहीं। सिद्धार्थ पूरा साथ देते हुए समझ रहे हैं, समझदारी के साथ खेल रहे हैं, मैच को ध्यान से देख रहे हैं। फिर से बैट्समैन ने बीट हो गए, इसे पॉइंट की तरफ मोड़ना चाहते थे मगर ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पाए, कोई रन नहीं। 2 डॉट गेंद, काफी कंजूस ओवर रहा है ये कमबैक किया है स्पॉटलाइट ने। बैट्समैन ने इसे मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ। अच्छी गेंद डाल रहे हैं विजयक। 3 डॉट बॉल, काफी देर के बाद अच्छी बॉलिंग देखने मिली है। इसे बैट्समैन ने बॉलर्स मांग रोहित शर्मा स्टाइल, और ये गेंद जा रही है मिड ऑन के ऊपर से, वहां बेदी की तरफ से फील्डिंग। सिर्फ 1 रन मिलेगा। मिस टाइम कर पाए, कांटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाए, इसे मिस टाइम किया है। 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर सिद्धार्थ खेल रहे हैं 27 रन पर, आदित्य खेल रहे हैं 54 रनों पर। सोमई का ये खूबसूरत ग्राउंड, सायन का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत लाइट, और आज मौसम काफ़ी ठंडा है। फरवरी का महीना 21 तारीख, और क्रिकेट का ये ज़बरदस्त वातावरण। विजय की अगली गेंद, इसे बैट्समैन ने स्टीयर किया है थर्ड मैन की तरफ, थर्ड मैन की तरफ दौड़कर बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। कुल स्कोर हुआ है 121। 3 विकेट के नुकसान पर विजयक ने अच्छा ऑफर डाला है। इन्होंने रन्स काफी कम दिए हैं। वापसी की है गेंद पर, इसे बैट्समैन ने मिड ऑन के ऊपर से मारा है। बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अच्छा सटीक सा थ्रो बॉलर की तरफ। विजय के ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसे रनों को रोकना होगा। 16 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ है 122 रन। 16 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छा ओवर डाला विजयक ने। काफी नपातोला ओवर था, सटीक सी गेंदबाजी थी और इकोनॉमिकल ओवर था। यही चाहिए इस वक्त स्पॉटलाइट को। अगर गेंद में बंद के रहना है तो रनों को रोकना होगा और इस मैच में वापसी लानी होगी। अगली गेंद से बैट्समैन ने मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्पार्टन का कुल स्कोर हुआ है 122 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद से बैट्समैन ने मारा है मिड ऑफ की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। कैच का चांस था मगर अपना लेफ्ट हैंड जो काफी डिफिकल्ट चांस था, उसने हाफ चांस था मगर इसे रोक नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए कैच को। आप कह सकते हो ये हाफ चांस था। अमित नायर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन दिया हुआ है और आ रहे हैं इस मैच के सबसे खतरनाक प्लेयर
आदित्य सिंह जो खेल रहे हैं 55 रनों पर 31 गेंदों पर, अगर ये 20 ओवर टिक गए तो कम से कम 80 रन बनाएंगे। इसे बैट्समैन ने फिर घुमा है, क्रॉस बैटेड शॉट, और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से और अंपायर का इशारा 6 रन। क्या बैटिंग की है, ये छठा छक्का था उनका। आपको अगर कुछ रिकॉर्ड मालूम करना है तो 17 छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इयन मॉर्गन का, जो उन्होंने अफगानिस्तान के सामने मॉर्गन ने मारे थे अफगानिस्तान के सामने। कुल स्कोर हुआ 129, 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर 3 गेंदों के बाद। ये छठा छक्का था। कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट को रोकना होगा, क्योंकि जिस तरह से रन्स बन रहे हैं कि आप आसानी से देखते हैं 170 के आसपास स्कोर पहुंच जाएगा। अमित नायर जिन्होंने 7 रन दिए 3 गेंदों पर, 129, 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर 3 गेंदों के बाद। अब आ रहे हैं राइट आर्म अराउंड द विकेट। इसे फिर बैट्समैन ने उछाला है, गेंद जा रही है बॉलर्स बैक, और ये कैच पकड़ लिया। बेदी ने जबरदस्त कैच पकड़ा है, जबरदस्त कैच पकड़ा है। 1-2 कैच छोड़ने के बाद उसके हौसले बढ़ गए रहेंगे और काफी कुछ नजर आ रहे हैं। सारी टीम जुड़ गई है उनके साथ और उससे शुभकामनाएं दे रही है कि जबरदस्त कैच पकड़ा है, अच्छा कैच पकड़ा है। और थोड़ी सी वापसी इस मैच पर, स्पॉटलाइट की वापसी इस गेंद पर। आदित्य सिंह आउट हो गए 61 रन बनाने के बाद। एक अच्छी पारी किल, और ड्रेसिंग रूम पर इसका हार्दिक स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। यहां पर मेरे साथी कमेंटेटर जबरदस्त कमेंट्री दे रहे हैं इंग्लिश में, क्या गजब की कमेंट्री दे रहे हैं और मैच का आनंद उठा रहे हैं। यहां पर सोमैया ग्राउंड में सायन का ये खूबसूरत नजारा, ये खूबसूरत लाइट के बीच में। आज मौसम काफी ठंडा है, 21 फरवरी 2023। तो एक अच्छी पार्टनरशिप, 70-80 रन पार्टनरशिप के बाद विकेट खोया है आदित्य सिंह का। 61 रन बनाए 33 गेंदों पर। बेदी ने अच्छा कैच पकड़ा। अच्छा कैच पकड़ा अमित कोहली ने। उनके हौसले बुलंद हो गए रहेंगे क्योंकि काफी गेंदें उस तरफ जा रही है, काफी गेंद आ रही है कोहली की तरफ और उसे अपनी फील्डिंग पर भरोसा है, एक दारो मदार है उसकी फील्डिंग पर, क्योंकि काफी शॉट उस तरफ जा रहे हैं। 4 विकेट के नुकसान पर है। कुल स्कोर हुआ है 129। चार विकेट के नुकसान पर 129। पिछले गेंद पर विकेट गया है। अच्छा, काफी लंबा रन अप, तेजी से गेंद आई और इसे पॉइंट की तरफ मोड़ा है। बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। इस वक्त रन रेट चल रहा है 7.74 का, जो इस ग्राउंड पर अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगली गेंद इसे घुमा है बैट्समैन ने और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद। 4 रन, 133 पर 4। नए बैट्समैन इस वक्त काफी ताजा है और काफी फ्रेश है, मौसम का भी आनंद उठाते हुए।
सचिन संघवी। तो कुल स्कोर हुआ है 4 विकेट नुकसान पर 134 17 ओवर की समाप्ति के बाद। Thank you so much, Raju Bhai. Raju Prithyani, our Hindi commentator today, doing a fabulous job in Hindi for all of you. Spartans 134 for 4, 3 overs to go. Anish Vijaykar, the off spinner, to bowl the 18th. Captain Siddharth Chawda, run a ball 34 so far. Goes Cal corner here. And it will only be a single. Right, new batsman Sachin Sanghvi will be on strike here. Waiting to see how he goes because he has big boots to fill in. Remember, Aditya Singh was going great guns before he got out caught. Amit Kohli put one down earlier, Vijay Singh, but caught one here. So he made amends. And Sachin Sanghvi will be stumped. Stepping out to the off spinner Anish Vijaykar, wanting to tonk him over his head, ended up only missing the ball. And the 5th wicket down here for the Spartans. This is not the best piece of news for the Spartans, but the Spotlight Social Scorchers would be delighted to see the back of Sachin here. In fact, it's the captain, Siddharth Chawda, who's walking back here. That's a very big wicket for the Spotlight Social Scorchers because he played a fine knock for his side, anchoring the innings all throughout. A run a ball 34 for the captain. Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API have successfully retained a strong clientele. Two new batsmen at the crease. Spartans wouldn't have wanted this really. Going into the death, you want set batsmen facing up. This is going to put some pressure on the men in blue. On the other hand, the men in yellow would be delighted because this is going to put a difference of 15 to 20 runs straight on the eventual total. He's gone downtown for a single. Anish Vijaykar has bowled a fine over so far. Only 3 runs coming of the 18th. He is in his last over. Has picked up a wicket, that of the captain, Siddharth Chawda. I think it was a catch that has gone down. Let's check it out on the replay. What's happened here? Because I missed it out live. Anish Vijaykar bowling that one outside the line of the off. So I'm going for the cut shot. Oh yes, it's carried. Would have been the 2nd wicket down in the over. Nevertheless, he's still out there. Gets a life. 18 overs have been bowled. 138 for 5 are the Spartans.
तो जर्विस लकी साबित हुए स्पॉटलाइट के लिए। उनकी कमेंट्री में 2 विकेट गिरे और दोनों ही सेट बैट्समैन, कप्तान और दूसरे मुख्य प्लेयर, दोनों आउट हो गए। ये तो आप देखते हो क्रिकेट में हमेशा ही होता है कि एक सेट बैट्समैन आउट है तो उनका पार्टनर भी उसे फॉलो करता है। तो कुल स्कोर हुआ है 5 विकेट के नुकसान के बाद 138 रन। बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 22-23 रन बनाने होंगे स्पार्टन को, क्योंकि यहाँ पर आप 160 रन बना लेंगे। मगर एक क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जब तक आप आखिरी बॉल नहीं डालते हो। आपको ये मालूम होगा टेस्ट मैच में 2 टाई टेस्ट मैच हुए, एक ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज 1960-61 में और 1986 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। दोनों ही मैच में ऑस्ट्रेलिया रहे। पांच विकेट के नुकसान पर 138। कादिर रंगवाला 2 रन पर और सचिन संघवी 3 रन पर। दोनों ही नए बैट्समैन। उन्हें इस वक्त बॉल फुटबॉल की तरह नहीं, अंगूर की तरह नजर आता होगा। स्ट्राइक पर है सचिन संघवी। खेल में थोड़ी सी रुकावट, फील्ड सेटअप करते हुए। अच्छा मैदान, खूबसूरत नजारा, सोमैया के ग्राउंड सायन, लाइटों के नजारे में खूबसूरत नजारा क्रिकेट का। ये लाइट्स देखकर मुझे याद रहे वानखेड़े स्टेडियम का ग्राउंड जो मरीन लाइंस पर है, समुद्र किनारे, जहां पर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 2011 2 अप्रैल 2011। स्ट्राइक पर है सचिन। फील्ड का मुआयना करते हुए वहां पर बॉलर सेटअप करते हुए लंबे रनअप के साथ। ये बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 20-22 रन बनाने होंगे। इसे बैट्समैन ने घुमा है, क्रॉस बैटेड शॉट मारा है, गेंद जा रही है मिड ऑन, डीप मिड ऑन की तरफ और ये बैट्समैन दौड़कर दूसरे रन की तरफ आ रहे हैं और ये 2 रन पूरे कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यही है क्रिकेट में, आखिरी 2 ओवर में आपको रन लेने हैं क्योंकि पीछे भी बैट्समैन है, वो लोग भी बल्ला लेके खड़े हैं। और आज के तारीख में कोई भी बैट्समैन को आप टेल एंड बैट्समैन नहीं कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर बैट्समैन कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया कैसे परफॉर्म किया, जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन ने, और ये क्लीन बोल्ड और ये बेल्स जो चमक रही है टिमटिमानी लाइट की तरह। 6ठा विकेट का पतंग। सचिन संघवी आउट हो गए। क्लीन बॉल, रनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए उन्होंने विकेट सैक्रिफाइस किया है। तो 138 स्कोर हुआ है। पिछली गेंद पर 2 रन तेजी से पूरे किया। अब सचिन संघवी आउट होने के बाद जो नए बैट्समैन आ रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि ओवर में 1-2 चौके छक्के लग जाए। कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके के नुकसान पर। कुल स्कोर हुआ है 140 रन। कार्तिक शाह की अगली गेंद जिसे बॉलर ने मारा है मिड ऑफ के ऊपर से 1 रन के लिए। सचिन संघवी खेल रहे हैं 5 रन पर। अब नए बैट्समैन आए रविंद्र झुनझुन। रविंद्र झुनझुनवाला और ये गेंद घुमा दिया है बैट्समैन ने बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये स्पॉटलाइट की टीम आनंद लेती हुई
ड्रेसिंग रूम की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट, रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी। ऐसे ही 3-4 चौके लगेंगे तो मैच में और भी मजा आएगा। क्रिकेट यहां पर चौके छक्के लगाते, और ये पिछला गेंद छक्का था। $147, 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 2 गेंदें और बाकी है। फील्ड का मुआवना करते हुए सचिन 11 रन पर खेल रहे हैं 6 गेंदों पर। इसे फिर बैट्समैन ने कट करना चाहिए, और यह वाइड का इशारा। वाइड बॉल आप नहीं डाल सकते हो बैट्समैन ने, एक तो आपको एक्स्ट्रा बॉल डालना होता है और 1 रन आप एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। तो कुल स्कोर हुआ है 148, 6 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे 160 के आसपास आ रहे हैं। कार्तिक की अगली गेंद, इसे बैट्समैन ने उछाल दिया है शॉट, और ये गेंद आ रही है 1 रन के लिए। यहां पर इशारा करते हुए फील्डर्स की विकेट की तरफ फेंका जाए गेंद को, और अच्छा थ्रो किया वहां पर। अच्छी फील्डिंग। 149, 6 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक अपने 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर। कार्तिक की एक गेंद, और ये अंपायर का इशारा वाइड, और इस तरह से 150 रन रक्षात्मक स्कोर। ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा सोमैया के ग्राउंड पर। आपको माना होगा कल की मैच में भी भारतीय की वुमेन्स टीम ने 150 रन बनाए, और डकवर्थ लुइस से मैच आयरलैंड से जीतकर और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, और वो खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगली गेंद, इससे बैट्समैन है और ये अपील कर रहे हैं बाल बाल बचे, ये डॉट बॉल। तो ये ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 150, 6 विकेट के नुकसान पर। और अब जबरदस्त कमेंट्री आखिरी ओवर देंगे हमारे इंग्लिश के कमेंटेटर। साथ अभी जुड़ जाइए ना, IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Thank you so much, Raju bhai. You're doing a wonderful job yourself in Indy. 150 for 6. What are we talking here? Can we get to 160, 165? Sachin Sangvi batting on 10 of just 6 balls. Ravindra Junjunwala yet to get some runs under his belt. He's only faced a couple of balls, but the onus will be on Sachin Sangvi. Bhaumik Vaidya to bowl the final over of the innings. Left arm spinner to 2 right-handers. The ideal way forward for the Spotlight Social Scorchers. This could be the turning over of the match. I say that because you want to reach 160, 65 here. They'll run a bye here. Brings Rabindra Junjunwala on strike. I'm waiting to see how Rabindra faces this over here. Does he take a single and give Sachin the strike, or does he take on the bowling himself? We'll get to know his approach on this delivery itself. Bhaumik Vaidya. Okay, looking to sweep. Dot ball here for the Spartans. This is the last thing that they would have wanted to have done so. You need runs in the last over, and you need them to come in the form of boundaries and sixes. 151 on the board, 4 balls to go in the over. Spotlight Social Scorchers, they would be very happy to see the score at this point in time in the match, because they would be expecting themselves to chase this down. He's got this just over the top of cover. Long off does pretty well, but they'll get a couple of runs here. Sachin gets through for the second. Rabindra Junjunwala getting a couple of runs here.
Right, Bhaumik Vaidya. Rabindra using his feet, very strangely walking towards the bowler, but he'll get a couple of runs here. Sachin Sangvi wants to come back for the third, but Rabindra is happy with two. Couple of balls now to go in the over. Bhaumik Vaidya's bowled a splendid over so far. Only 5 runs coming of it. Rabindra Jhunjhunwala facing up. Go straight to mid-wicket, but they'll pick up a single here. So it will be Sachin Sangvi to face up to the last ball of the innings. 156 on the board. Can he finish off in style here? Bhaumik Vaidya hasn't conceded a boundary so far. He's done a fabulous job for his side. Men in yellow would be very happy so far with the job that Bhaumik Vaidya has done. Slog sweep attempted. On the bounce to mid-wicket. He misfields. And the ball will trickle into the ropes. So good end for the Spartans. They were looking out for 180, but they have to make do with 160 here. They would be happy with the score considering the start that they got in. Couple of wickets fail and then Vijay Singh run out. There it was Aditya Singh who steadied the ship with a great half century. Finally managing to get to exactly 160 in their allotted 20 overs, having lost 6 wickets, the Spartans. Now this is exactly what happened. Aditya Singh, 61 of 33 balls. Siddharth Chavda steadied the ship, anchored the innings, 34 of 35. Vijay Singh unfortunately run out, 28 of 22 to him. In the bowling department, Abhishek Zaveri picked up a wicket in his 4 overs, giving away only 18 runs. And Neeraj Bajaj as well picked up a wicket. So the Spartans, 160 for 6 with the Spotlight Social Scorchers. The target for them will be exactly 161, going at a run rate of just over 8 runs and over. So the second innings will start off in 10 minutes from now, bringing you live action thereafter. Till then, we'll take a short innings break. Thank you so much for having joined us till now.
कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट।
कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट।
कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट।
Right, second innings about to get underway. Well bowled. Beating the bat of Anish Vijayakar first up. Never easy to do. Anish is one of the finest batsmen you will see in the tournament. Quality opening batsman. Very stylish right-hander. Has the ability to hit boundaries with absolute ease without dropping a sweat. A drop of sweat rather. That's how good Anish Vijayakar is. If he is out there, you can expect to see some authentic cricketing shots. Full toss. Completely mistiming that one. I'm waiting to see what the umpire has to say on this one. Okay, it's been deemed as a legitimate delivery. Well bowled. Very well bowled, Gurvineet. Leaving the right-hander once again. He is getting some swing in the air, which will help him going forward. The swing will last at least for a couple of overs, if not for 3 for Gurvineet Singh. Anisha facing up. Oh, well bowled again. Feeling for it outside the line of the off stump. Comprehensively beaten for the second time. He's gone through the bat for the third time, has Gurvineet Singh. Gone past the bat comfortably. Beat Anish Vijayakar on the first ball, and now back to back. Has beaten the bat of Anisha. Outside edge. No, in fact, he's got in this between point and cover for a single. Brings his partner Anish Vijayakar on strike. Both Anishas, but with different spellings. One with the double E and one with an I. Either ways, the pronunciation remains the same. Anish Vijayakar facing up. Drives straight to cover. Quiet first over. Well bowled, Gurvineet Singh. 2 for no loss are the Spotlight Social Scorchers. ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 2 रन। गुरविनीत सिंह ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया, 2 रन दिए उन्होंने। तो 114 गेंदों में 159 रन बनाने हैं। अच्छा, बैट्समैन ने उछाला है, शॉट जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन पूरा किया और बैट्समैन ने दौड़कर दूसरा रन पूरा किया। रनों की रफ्तार को बढ़ानी होगी। एक ज़बरदस्त कमेंट्री देते हुए जर्विस इंग्लिश में, जिसे आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा। मैं भी क्रिकेट का आनंद उठा रहा हूं राजू पृथियानी, और ज़बरदस्त प्रेरणा मिल रही है मुझे जर्विस से। 4 रन बिना किसी नुकसान के, और ये अपील कर रहे हैं। अंपायर ने बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा, कॉन्फिडेंट थे कि नॉट आउट है। अगर इस मैच में स्पॉटलाइट को आना है तो तेजी से 1-2 विकेट लेने होंगे।
एक ओवर 2 समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 4 रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इसे बैट्समैन ने, इसकी बैटिंग देते मुझे याद आ रही है क्रिस टेवरी की तरह, जो इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन थे 1980-81 में जब भारत के दौरे पर आई थी। ये फील्ड का मुआवना करते हुए अनीश विजयकर जो 1 रन पर खेल रहे हैं। पांच रन बिना किसी नुकसान के। अनीश स्ट्राइक पर है। अनीश ने इसे मोड़ा है बैट्समैन ने। यहां पर अपील रन आउट की। नॉट आउट का लेग अंपायर ने स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बैटिंग के बीच में। सबसे आखिरी निर्णय होगा रन आउट का। अगर मिक्सअप होंगे तो ये डबल बोनस हो जाएगा फील्डिंग साइड के लिए। 6 बिना नुकसान के 1 ओवर 4 गेंद के बाद परवश शाह, जिन्होंने 4 गेंद पर 3 रन दिए और 1 लेग बाई। अगली गेंद फुल टॉस और इसका फायदा नहीं उठा पाए। थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, इन्हें ये पावर प्ले का एडवांटेज लेना होगा। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शाह की और ये अंपायर का सीधा इशारा वाइड बॉल। थोड़ा चकमा देना चाहते थे बैट्समैन को। अमित शाह ने गेंद को देखी और उसे छोड़ दिया अंपायर के फैसले के लिए। 7 बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद अनीश खेल रहे हैं 1 रन पर, अमीश खेल रहे हैं 4 रन पर। परवश शाह की अगली गेंद से मोड़ा है और ये अपील की है, लेग अपील BW की। नॉट आउट का अंपायर ने। एक्साइटमेंट ज्यादा थी और उत्साह कम था। 7 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की सहमति के बाद। आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, EMI हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार। छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। It will be Gurvineet Singh to continue. Has bowled a fabulous first over. Waiting to see if he's getting the same amount of swing that he was getting in the first over. Drives. Finds the gap, finds the boundary. The timing on that one was sublime. The placement was even better. Anish Vijayakar. That's exactly what he can do. Take a look at this shot once again. Hardly seemed to have hit that. But that ball went to the boundary at the rate of knots. Anish is one of the finest timers of the cricket ball. Flicks. This time finds Parvaz Shah in the deep. That flick shot as well was timed really well. That's what you will get with Anish Vijayakar. Effortless timer of the cricket ball. Now Anish Shah will be facing up.
The role for Anish Shah will be more of a supporting role to Anish Vijaykar, because as we know, Anish Vijaykar has the ability to score at a very good strike rate. They've started off really well here, have the Spartans with the ball. Anish Vijaykar a run ball 6. That boundary through the offside. Shades of Virendra Sehwag in that. Well bowled, Gurvineet. That's exactly what he has been doing time and time after. This is the 4th time he's gone past the bat. They would do well to keep a slip in there for Gurvineet, particularly against Anish Shah. Comes across as a shaky starter. Has faced 10 balls here for his 4 runs. There again goes past the bat. This is quality stuff from Gurvineet Singh. He is on top right now. He has bowled his 1.5 overs really economically here. Has gone for only 7 runs so far as Gurvineet Singh. Last ball of the 3rd over. Anish Shah struggling to get bat onto ball. Glided away. Down towards 3rd man for a single. 3 overs have been done and dusted with 13 for no loss are the Spotlight Social Scorchers. Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API have successfully retained a strong client. तो कुल स्कोर हुआ है 13 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पिछले ओवर में सुनील गावस्कर टाइप कवर ड्राइव मारा था। अनीश ने कवर ड्राइव जो जबरदस्त गजब का कवर ड्राइव था। सुनील गावस्कर जो फेमस थे सनी के नाम से, जिन्होंने 10,000 रन बनाने वाले वर्ल्ड के पहले बल्लेबाज रहे, उन्होंने अहमदाबाद में ही ये रिकॉर्ड किया था 10,000 रन पूरा करने का, सिंगल लेते हुए मिड विकेट पर 1 रन लेकर। 13 रन बिना किसी नुकसान के बैट्समैन ने इसे मोड़ा है, मिड ऑन की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा किया। रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी, पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा। रन रेट काफी स्लो है, इसका फायदा फील्डिंग साइड उठाएगी, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि 6 ओवर में कम से कम 50 रन बनाने होंगे। स्पॉटलाइट का स्कूल स्कोर है 14 रन 3 ओवर 1 बॉल की समाप्ति के बाद। शाह जिन्होंने अपने इस ओवर में 1 रन दिया हुआ है, एवरेज चल रहा है 4.42 का फील्ड का मुआवना करते हुए। अनिश जिन्होंने 6 गेंद में 6 रन बनाए, अमीश ने 6 रन बनाए 13 गेंदों पर। शाह की अगली गेंद, इसे मोड़ा है बैट्समैन की तरफ से और ये वाइड का इशारा। काफी वाइड जा रहे हैं, मगर चौके छक्के की बरसात करनी होगी। मैं समझता हूं, जहां तक अंदाजा है, फील्डिंग साइड को एडवांटेज है, इन्हें हवा की भी मदद मिल रही है। आप जानते होंगे वानखेड़े स्टेडियम में भी जो टीम सेकंड फील्डिंग करती है उसे एडवांटेज मिलता है अगर ड्यू फैक्टर ना हो तो। 15 बिना किसी नुकसान के 3 ओवर 1 समाधि के बाद। दूसरी गेंद जो थी वाइड थी। शाह की अगली गेंद,
और यह अपील दौड़कर बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया, चिकी सिंगल। रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी, कम से कम 1 चौके और छक्का लगना होगा। ये 6 ओवर में रन रेट काफी नीचे है। ये चिकी सिंगल लिया, 1-2 से काम नहीं चलेगा। और नपी तुली बॉलिंग डाल रहे हैं, सटीक गेंदबाजी। तो बचे हुए 100 गेंदों में 145 रन बनाने हैं। शॉट मारा है, बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 3 ओवर 3 गेंद की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 17 रन। अनीश को वैसे ही चौके मारने होंगे कवर ड्राइव, जिनके लिए वो मशहूर है। उम्मीद है इस ओवर में 1 चौका मारेंगी। और इसी इंतजार में कमेंटर बॉक्स वाले अगली गेंद, और इन्होंने बॉलर की कमेंटेटर की बॉक्स नहीं है, 4 रन। ये सूरत हाल बता रही है। 1 बाउंस 4। तो कुल स्कोर हुआ है 21। गजब की बैटिंग कर रहे हैं। वन बाउंस 4, 21 रन बिना किसी नुकसान के। 10 विकेट है हाथ में। एक एडवांटेज रहेगा बैटिंग साइड को, स्पॉटलाइट को। विकेट बचा के रखे तो 160 का स्कोर असंभव नहीं। अगली गेंद से फिर मोड़ा है मिड विकेट की ऊपर से, और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, छक्का, 6 रन। अंपायर का इशारा, 6 रन। तो 2 गेंदों में 10 रन। कलाइयों का उपयोग करते हुए फ्लिक किया है उससे मिड विकेट के ऊपर से। ये शॉट मारने में केएल राहुल एक्सपर्ट है, मगर केएल राहुल टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वाइस कैप्टेंसी की भी पोजीशन गंवा ली है। ऐसे उम्मीद किया जा रहा है कि तीसरे टेस्ट में शुभमन गिल को चांस मिलेगी। 27 बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, और इसे बैट्समैन ने मोड़ा है कवर्स की तरफ। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन। गजब का शॉट, स्ट्रेट शॉट, जबरदस्त शॉट, कवर की तरफ। 4 रन। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 31। और आगे का सूरत हाल देंगे जर्विस, जो इंग्लिश में हमारे गजब के कमेंटेटर है, तारो प्रोफेशनल। कुल स्कोर हुआ है 31, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। Four overs, 31 for no loss. Spotlight Social Scorchers. They've gotten off to a very good start here. Gurvineet Singh was bowled 2 overs at a very good economy rate, because he's been really economical single-handedly. It's been Parva who's come under the pump. Required run rate of 8.21. That will put a lot of pressure on the Spotlight Social Scorchers always, because every time that you don't hit the required run rate every over, it's only going to shoot up.
Gurpreet Singh into his third over. Once again goes past the bat. He's done that on numerous occasions so far as Gurpreet Singh. As you can see, Anish Vijayakar 21 of just 10 balls. Just goes to show you how well he's batting, going at a strike rate of well over 200. Anish Shah, he needs to play a good supporting role to Anish Vijayakar here because he's putting a lot of pressure on his partner. 7 of 17 balls. That is a lot of balls for a very little number of runs. He's playing way too many shots for the number of runs he has to show for. Anish Shah, he is clearly struggling out there. This time gets bat to ball to point. Anish Vijayakar will call him through for the single. Gurpreet Singh, the best thing about him is that he knows how to bowl in the channel. In and around the off stump, hint of movement in the air, off the deck. He is looking the part out here. Couple of balls to go in the fifth. Anish Vijayakar having a close look at the field. Needs to make sure that he knows exactly where the fieldsmen are standing. Virender Sehwag was a person who only seen the gaps. He always said, I don't look at where the fielders are standing, I only look at the gaps and try to hit them. Very seldom do you see a batsman say that or do that. Usually you look at the fielders and you understand or have an idea of where they're standing so that you can hit the gaps. But Virender Sehwag was a different man, different kettle of fish altogether. Drives again effortlessly through the offside for a single. Anish is so pleasing to the eye. Anish Vijayakar, shouldn't misunderstand because Anish Shah needs some runs under his belt here. Anish Vijayakar just having a short word with him. Will be the final ball of the fifth over. Spotlight Social Scorchers 34 for no loss. At the back of some good batting from Anish Vijayakar. Full toss, straight to backward point. I think he's going to be run out here. So his struggles come to an end. Anish Shah has to depart here. Run out, bit of a misunderstanding, wanting to go through for the single. But Anish Vijayakar did not take the single on that occasion. It's always the non-striker's call once it's behind the popping crease. The ball, that is. So it was always Anish Vijayakar's call. This time round, Anish Shah wanting the single whilst there wasn't one. One has to believe that Anish Vijayakar was spot on with the fact that there wasn't a single in there. 5 overs have been bowled. 34 for no loss are the Spotlight Social Scorchers. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। 90 गेंदों में 127 रन बनाने हैं। अभी अभी 1 रन आउट हुआ है, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है गुरप्रीत सिंह की, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग डाली है। बड़े दिमाग के साथ बॉलिंग डाली उन्होंने। रन रेट बढ़ता हुआ, दबाव आ रहा है बैटिंग साइड पर। अनीश खेल रहे हैं 22 रनों पर
और अब रन रेट है 8.47 का। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अनीश खेल रहे हैं 22 रन पर। अब अगले बैट्समैन आए अभिषेक जवेरी, जिन्हें अपना खाता खोलना है। सामना करेंगे अनीश। 6ठे ओवर की पहली गेंद का। खूबसूरत नज़ारा इस मैदान का, सायन का सोमैया ग्राउंड, लाइट्स के नीचे, और बैट्समैन ने से मोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ और आसानी से 1 रन पूरा किया। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। हालांकि उनके पास 9 बैट्समैन है, मगर चौके छक्के मारने होंगे। ये रन रेट बढ़ता हुआ 9 के ऊपर। पैंतीस, 1 विकेट नुकसान पर। अब तक 3 चौके और 1 छक्का लुक्चा है इस इनिंग पर। नए बैट्समैन है अभिषेक जवेरी, और इसे पुश किया है फॉरवर्ड कवर्स की तरफ। कोई भी रन नहीं। 1 रन लिया बैट्समैन ने, माफी चाहता हूं। 36, 1 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत नज़ारा ये सोमैया का ग्राउंड, सायन का ये खूबसूरत नज़ारा। रविंद्र झुनझुनवाला की एक गेंद, और बैट्समैन ने इसे मोड़ा है 1 रन के लिए। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं स्पॉटलाइट वाले। झुनझुनवाला अपने रनअप पर, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। ऐसा लगता है इस ओवर में 1 चौका चका जाएगा। झुनझुनवाला की अगली गेंद, इससे बैट्समैन ने मोड़ा है मिड ऑन की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। 38, 1 विकेट नुकसान पर। 86 गेंदों में 123 रन बनाने होंगे। प्रेशर बैटिंग साइड पर बढ़ता हुआ और बढ़ता हुआ। अनीश के ऊपर जिम्मेदारी, और से ड्राइव किया बैट्समैन ने कवर्स की तरफ, और दौड़कर 1 ही रन पूरा किया। 1 ही रन मिलेगा। डीप कवर्स पर एक फील्डर रक्षात्मक तरीके से, एक डिफेंसिव फील्ड रखा हुआ है। रन रेट बढ़ता हुआ 8.61। झुनझुनवाला काफी आराम से बॉलिंग डालते हुए अपने 6ठे ओवर के आखिरी गेंद पर आएंगे। सामना करेंगे अभिषेक जवेरी, जो 2 रन पर खेल रहे हैं। झुनझुनवाला की एक गेंद, और ये शायद कट लगा था या कैच छोड़ा, मगर दोनों हाथ ऊपर किए झुनझुनवाला ने। और ये ओवर की समाप्ति के बाद कुछ नाराज है विकेट कीपर से। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 39 रन। और आगे कमेंट हमारे इंग्लिश में जर्विस, जिनकी इतनी भी तारीफ की जाए कम है। Thank you so much, Raju Bhai. You're doing a phenomenal job yourself.
in the commentary box in Hindi. He's doing a stupendous job bringing you the commentary live in Hindi. Anish Vijayakar facing up. Aditya Singh, the half-centurion, the hero of the first innings, now has ball in hand. Anish gets a single off the very first ball. Brings his captain, Abhishek Zaveri, on strike. 121 needed of 83. Spotlight Social Scorchers have a lot of work ahead of themselves. Abhishek Zaveri has just walked into bat. Needs to get accustomed with the conditions. Wanted to bat second. Here he is batting under lights. Wanted to bat when the dew will be coming onto the field, which we'll see coming more towards the end of the game. That single will bring Anish Vijayakar on strike. Anish is going along really well here. 26 of just 15 balls. Asking the question, denied by the umpire. That was always going down the leg side. That's exactly why Anish Vijayakar employed the sweep shot. Wanted to ramp it away. Unfortunately, could not get back to ball. That is a quality delivery from Aditya Singh. The wicket-keeper has let go of an opportunity here. A stumping opportunity goes a-begging. And this is what happened. Anish going for the drive. The ball gripping and turning out here at the Somaiya cricket ground. I think he's hurt himself here as the wicket-keeper. But Anish Vijayakar lives to fight another day. This is very good bowling from Aditya Singh. He is keeping it tight. Only 2 runs have come off the over so far. Drives. Finds cover. Good fielding there by the fieldsman at cover. Stopped a certain boundary. 7 overs have been bowled here. 42 for 1 are the Spotlight Social Scorchers, going at exactly a run rate of 6 runs per over, whilst the required run rate is climbing to close to 9. Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele. स्कोर हुआ है 42, 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद अभिषेक जवेरी खेल रहे हैं 3 रन पर और अनीश विजयकर जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 27 रन पर खेल रहे हैं 19 गेंदों पर। जिसे बैट्समैन घुमाना चाहते थे, ऊपर की तरफ मारना चाहते थे, मिस जज कर गए और कोई भी रन नहीं। पिछला ओवर काफ़ी अच्छा ओवर था जो दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम याद दिला रहा था। रविंद्र जडेजा स्टाइल बॉलिंग दी। ये पिच जो है स्पिनर को हेल्प कर रहा है, ये स्पिनर को आगे भी चलकर हेल्प करेगा। और इसे बैट्समैन ने मोड़ दिया है, फाइन लेग की तरफ से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और ये अंपायर का इशारा 4 रन। यही तो चाहिए क्रिकेट में, चौके और छक्के। अगर आपको मैच जीतना है तो
पोजीशन किया, फ्रंट फुट पर आए, क्रॉस बैटेड शॉट मार दिया 4 रन के लिए। 46 एक विकेट नुकसान पर। तीन वाइड डाल चुके हैं इस इनिंग्स पर। परेश शाह की अगली गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, ये गई विकेट कीपर के पीछे और दौड़कर 1 रन पूरा किया। ये बाय का इशारा। स्पिनर्स को अपना रंग दिखाना होगा, इस मैच में आना है तो स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है। आप जानते हैं इंडिया को इंडिया में हराना कितना मुश्किल है, और यही फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया के सामने ने, और भारत बॉर्डर का ट्रॉफी में 2-0 से आगे। अनीश विजय का सामना करेंगे, और ये बैट्समैन ने उछाला है, मारा है, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का। अच्छी गेंद थी, जूसी थी, ओवर पिच गेंद थी, मगर फायदा नहीं उठा पाए। परेश अपने रन अप पर। अभिषेक जवेरी खेल रहे हैं 3 रन पर, जीतने के लिए 113 रन 74 गेंदों पर। इसे मारा है बैट्समैन ने डीप मिड ऑन की तरफ, 1 रन पूरा किया। स्कूल स्कोर हुआ है 49, 1 विकेट नुकसान पर। यह 8वें ओवर की आखिरी गेंद है परेश शाह की। विकेट्स लेने होंगे, विकेट्स लेने होंगे। अगली गेंद, इसे कट किया है, लेट कट, 1 रन, और इस 1 रन के साथ अर्धशतक पूरा। 50 रन पूरे हुए स्पॉटलाइट के 8 ओवर की समाप्ति के बाद। तो आगे का इंग्लिश में हाक देंगे जर्विस। Idfc Singh continuing. Gets a single there, does the captain Abhishek Zaveri. Gives way to Anish Vijayakar. Anish batting on 32 of just 23 balls. Neatly deflected for a single. Thanks to Anish Vijayakar, the score for Spotlight Social Scorchers looks decent. Out of the 52, he's the man who's gotten 33. Will pick up another single to short third man. The power play is done and dusted with. Not easy to get boundaries, but the Spotlight Social Scorchers, they need a few boundaries here. They need to up the current run rate. They need to keep abreast with the required run rate. Right now Idfc Singh bowling a very tight line. He is not allowing the batsman any room whatsoever. Bowling wicket to wicket, making life difficult for the batsman. 4 balls, 4 singles so far. Would have been a dot ball, will be a dot ball.
Abhishek Zaveri, captain of the Spotlight Social Scorchers today. Usually we are very accustomed to see Mr. Deepak Modgal walk out for the Spotlight Social Scorchers as captain. Today he isn't available. Swung away through the offside for 4. Ends the over on a high. They needed that boundary to the Spotlight Social Scorchers. 9 overs, 7 bowled, 58 for 1 are the men in yellow. As we take a look at the replay once again, making room for himself, clearing his left leg and swinging across the line. Gets a boundary nevertheless. Well done, Abhishek Zaveri. Over to my partner, Raju Bhai, who's doing a phenomenal job himself in Hindi for all of you. अगली गेंद फुल टॉस पे से घुमा है बैट्समैन ने बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद 4 रन के लिए और ये 3 गेंद में 2 चौके आए हैं। कुल स्कोर हुआ है 62, 1 विकेट नुकसान पर। फुल टॉस घुमाया है बैट्समैन ने, क्या शॉट मारा है, इसे आप झाड़ू शॉट कह सकते हैं हिंदी में। मैं हिंदी में ही कमेंट्री दे रहा हूं और जबरदस्त शॉट मारा है। अनीश विजयकर अब 38 रन पर खतरनाक साबित हो रहे हैं। स्पॉटलाइट की जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं अनीश विजयकर, कप्तान जवेरी खेल रहे हैं 11 रन पर। स्पॉटलाइट का कुल स्कोर हुआ है 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा अगर मैच जीतना है तो। अगली गेंद, इसे बैट्समैन ने घुमाया है कवर्स की तरफ, 1 रन पूरा किया है और ये 4 रन। मिसफील्ड हुई वहां पर, 3 बहुमूल्य एक्स्ट्रा रन दे दिए फील्डर ने। बॉल को रोक सकते थे पर रोकने में नाकामयाब। बिल्कुल रोक सकते थे मगर नहीं रोक पाए। आउटफील्ड भी एनकरेजिंग है मगर नहीं रोक पाए। 95 रन चाहिए 64 गेंदों पर, 2 गेंद पर 2 लगातार चौके। परेश शाह महंगे साबित होते हुए। परेश शाह की अगली गेंद, इसे बैट्समैन ने मोड़ा है, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ। 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने, दौड़कर दूसरा रन भी पूरा किया। काफी महंगा सौदा ओवर फाइट हो रहा है। 10 रन मिल गए पहले 3 ओवर गेंदों में और ये ओवर काफी महंगा साबित हो रहा है। परेश शाह का ये महंगा ओवर और इससे फुल एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं बैटिंग साइड। मैन इन येलो इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ये ओवर में टारगेट कर रहे हैं परेश शाह को। परेश शाह अपना फील्ड सजाते हुए। फील्ड में थोड़ी सी रुकावट, फील्ड प्लेस कर रहे हैं। परेश शाह थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं। पहले 2 गेंद में 2 चौके, तीसरे गेंद पर 2 रन और ये ओवर का पूरा फायदा उठाया अनीश ने। कुछ ना कुछ तो करना होगा स्पार्टन को। स्पॉटलाइट का स्कोर हुआ है 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या शॉट मारा है कवर्स की तरफ। अनीश खेल रहे हैं 44 रन पर, अभिषेक 11 रन पर। हालांकि आसान सा सिंगल था मगर नहीं लिया। इसे मारा है कवर्स के ऊपर से और ये अंपायर का इशारा। 6 रन, 16 रन आ चुके हैं इस ओवर में और आखिरी गेंद बाकी है। 50 रन अनीश के, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 30 गेंदों पर 50 रन, यानी उनके स्ट्राइक रेट है 170 के आसपास।
अब आखिरी गेंद, ये ओवर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का। इसे बैट्समैन ने मोड़ा है स्क्वायर लेग की तरफ और स्ट्राइक रखेंगे, नहीं दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लिया। तो कुल स्कोर हुआ है 76, 1 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स मैदान पर, और इस वक्त देखें फील्डिंग साइड इस वक्त डबल प्रेशर पर है। ये पिछला ओवर काफी महंगा था। ड्रिंक्स मैदान पर आगे का सूरत हाल, जर्विस। Rabindra Jhunjhunwala into the attack down the leg side, will be signalled as a wide ball. Spotlight Social Scorchers, they found Anish Vijayakar, their opener, who's batting on 52 of just 31 balls, has played a splendid knock so far for his side. I said it initially itself that you need to watch out for this batsman, one of the finest batsmen you will see on display.
Abhishek taking a single of the first ball, giving the strike back to Anish Vijayakar. The more the number of balls that Anish Vijayakar will face, the more the chances of the Spotlight Social Scorchers getting closer to the total of the Spartans. He is in sublime form, is Anish Vijayakar. I've seen him play some mind-boggling knocks for the sides that he has represented. We'll have to come back and bowl that one again. 78 for 1. They're looking good here, our Spotlight. They need 83 of 58 balls, which is very doable with 9 wickets in hand. Match in the balance, one would say. It could be anybody's game from here. Oh, he's gone over the top over here. But how far has he hit that? Long gone, will take it. This is a big wicket for the Spartans. Anish Vijayakar, who was looking the part out there for Spotlight Social Scorchers, will have to depart here. The men in yellow have been rocked. They will have to literally restart here, because the captain Abhishek Zaveri is just finding his feet out there in the middle. The big fish goes for a good knock. Well played, Anish Vijayakar. 52 of 33 before being caught at long gone. Second wicket down at the score of 78 with 3 balls to come in the 11th. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Cut away for a single. Gets off the mark, does Neeraj Bajaj. It will be Abhishek Zaveri to face up to the last ball of the 11th over. Batting at a run a ball 12 at the moment is Abhishek Zaveri. Cuts. Will find third man. Exactly 80 for 2 after 11 are the Spotlight Social Scorchers with 82 needed of the last 9. कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट
3 महीने में एक बार। छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है, 3 महीने में नहीं बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। आदित्य सिंह आ रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद 80 रन, 2 विकेट उछाला है बैट्समैन ने, बॉलर्स बैक और अच्छी फील्डिंग वहां पर। बैट्समैन ने 1 रन दौड़कर और दूसरा रन पूरा किया है। 2 फील्डर भागे थे इस फील्डर के पीछे और अच्छी फील्डिंग वहां पर। पिछला ओवर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच पर, जहां पर झुनझुनवाला ने विकेट लिया, सेट बैट्समैन को आउट किया। काफी अच्छे रन बना रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़े 10-12 रन बनाने होंगे इस ओवर में अगर मैच में आगे बढ़ना है तो। और ये अपील 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 और नट आउट का अंपायर ने। बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। कप्तान जवेरी के ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। नीरज बजाज 1 रन पर खेल रहे हैं। नए बैट्समैन आए मैदान पर तो टाइम लगेगा सेटअप होने। देखें क्या कमाल दिखाते हैं नीरज बजाज। नीरज बजाज और ये बाल बचे, बॉल टर्न किया और आदित्य सिंह जो मुझे याद दिला रहे हैं रविंद्र जडेजा की। पिच जो है हेल्प कर रहा है स्पिनर्स को। पिच इस वक्त हेल्प कर रहा है स्पिनर्स को। ओस नहीं है मैदान पर, ओस बिल्कुल ही नहीं है मैदान पर। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर की चौथी गेंद आदित्य सिंह लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बैट्समैन ने मोड़ा है इसे मिड विकेट की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। मैच इस वक्त दिलचस्प स्थिति पर कहीं भी जा सकता है। या 1-2 विकेट या 1-2 चौके छक्के और मैच मुड़ सकता है इस तरफ उस तरफ या नीचे या ऊपर। अभिषेक जवेरी स्ट्राइक पर 16 रन पर खेल रहे हैं। 84 रन 2 विकेट नुकसान पर। ओह अच्छी गेंद, आदित्य की अच्छी गेंद। अच्छी गेंद डाल रहे हैं आदित्य सिंह। लपी तुली गेंद, सटीक गेंदबाजी, कंजूसी से रन दे रहे हैं। रन रेट बढ़ता हुआ 9.43 और इसे बैट्समैन ने पुश किया है मिड ऑफ की तरफ। 1 रन, 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 रन आए इस ओवर में। आदित्य सिंह ने 5 रन दिए। कुल स्कोर हुआ है 85 2 विकेट के नुकसान पर। पचासी रन 2 विकेट के नुकसान पर। झुनझुनवाला अगली गेंद तो इसे बैट्समैन ने उछाल दिया। गेंद जा रही है और ये कैच, गजब का कैच पकड़ा है यहां पर। मैच मुड़ता हुआ विजय सिंह ने जबरदस्त कैच पकड़ा।
विकेट विकेट और विकेट, लगातार दूसरे ओवर में ये विकेट। झुनझुनवाला गजब की बॉलिंग डाल रहे हैं। बैट्समैन ने इसे क्रॉस बैट शॉट मारा था, कोई जरूरत नहीं थी शॉट मारने के लिए। हालांकि प्रेशर बढ़ रहा था बैट्समैन पर, क्योंकि 9.5 रन की रन रेट बढ़ गई थी। और अभिषेक जवेरी 17 रन की पारी खेलते हुए, कप्तान की पारी खेलते हुए आउट हो गए। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर विजय सिंह ने बाउंड्री लाइन की तरफ, जो फील्ड पर सचिन तेंदुलकर हमेशा फील्ड करते हैं। तो 3 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर हुआ है 85 रन। रन रेट है 6.99 का। झुनझुनवाला ने 2 विकेट लिए इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट। काफी अच्छी फील्ड सेटअप की है। बॉलर जो है फील्ड को देखकर बॉलिंग डाल रहे हैं, उसे पता है कि बैट्समैन कहां शॉट मारने वाले हैं। झुनझुनवाला फिर फील्ड सेटअप करते हुए, नए बैट्समैन आए तपन भट्ट, और रन रेट बढ़ता हुआ 10 के आसपास। इस वक्त प्रेशर है, हालांकि कह सकते हैं कि गेंद जो है थोड़ी तरफ जो पलट रहे स्पार्टन की तरफ। इस वक्त एडवांटेज है स्पार्टन को, मगर एक क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 2-3 छक्के लग जाए और चौके लग जाए तो मैच फिर मोड़ सकता है। झुनझुनवाला की दूसरी गेंद, ओ अच्छी गेंद। बैट्समैन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। खूबसूरत नज़ारा सायन का, यह सोमया ग्राउंड और लाइट्स के नीचे ये सुंदर दृश्य। खूबसूरत मैदान, आउटफील्ड काफी तेज। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब नीरज बजाज जो 2 रन पर खेल रहे हैं, दोनों ही नए बैट्समैन हैं, तो दोनों को रंग जमाने में टाइम लगेगा। इसे बैट्समैन ने मारा है, बॉलर्स बैक जा रही है गेंद मिड ऑन की तरफ, और दूसरा रन भी पूरा किया। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यही तो चाहिए बैटिंग साइड की तरफ से, उन्हें रनों को बढ़ाना होगा अगर इस मैच में रहना है तो। रन रेट अब 10 के आसपास। थोड़ी सी ओस है मैदान पर, इसका फायदा बैटिंग साइड उठा सकती है। झुनझुनवाला को थोड़ी परेशानी हो रही है बॉलिंग करने में। झुनझुनवाला की अगली गेंद, और इसे अपील करते हैं विकेट कीपर, और यह वाइड का इशारा। काफी रेयर देखा जाता है कि झुनझुनवाले ने नो बॉल, ये वाइड दिया हो। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं झुनझुनवाला। 45 गेंदों में 72 रन मारा है शॉट, फिर गेंद मिड ऑन की तरफ, 1 बाउंस, 1 रन पूरा किया। रनों को बढ़ाना होगा, इस वक्त जिम्मेदारी है तपन भट्ट की तरफ, जिन्होंने 1 ही रन बनाया। नीरज बजाज खेल रहे हैं 5 रन पर। दोनों ही नए बैट्समैन हैं और दोनों को सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पवेलियन पर बैट्समैन तैयार है। इसे बैट्समैन ने पुश किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छा सिंगल। इक्यानवे रन 3 विकेट नुकसान पर। 13वें ओवर की आखिरी गेंद। झुनझुनवाला की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। इस ओवर में उन्होंने विकेट भी लिया हुआ है। देखिए अब इस ओवर की आखिरी गेंद में क्या करें। झुनझुनवाला की एक गेंद, इसे मोड़ा और ये अपील की है, ये हाफ हार्टेड अपील थी, और 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। तो कुल स्कोर हुआ है 92 रन 3 विकेट नुकसान पर। का हाल देंगे इंग्लिश में जर्विस।
There's a loud shout for leg before wicket. Leg buys is the signal. I reckon that the umpire thought that it was going down the leg side. Two relatively new batsmen at the crease for the Spotlight Social Scorchers. Tapan Bhatt facing up. Oh, well bowled. Very well bowled there. Asking the question. Tapan unmoved. Idfc Singh has done a phenomenal job for his side. He has kept it tight. He hasn't allowed the right-handers any room whatsoever. He's bowled wicket to wicket. This ball turned and gripped. Gripped and turned rather. Swept away. When in doubt, sweep. I think it was a chance for the fieldsman in the deep. The umpire's gonna have to wait and see. Boundary signal there by the umpire. We'll see this on the replay. I think it was a catch that was put down out there in the deep, at deep square leg, employing the sweep Tapan Bhatt. Oh yes, it was an opportunity. Mistimed the jump on that occasion. Required run rate is rising here. It's closer to tens, which is never the best way forward, particularly when you have two new batsmen at the crease. It's not going to be easy from here for the Spotlight Social Scorchers. Spartans, they're doing a phenomenal job with the ball so far. They've picked up two huge wickets, one of Anish Vijaykar caught at long gone, and then their captain Abhishek Zaveri holding out in the deep at deep mid wicket, which I think the fieldsman taking a smart catch on the boundary. It has put the Spotlight in a spot of bother. I think he's got back to ball there. It will go for 4. Brings up the 100 for the Spotlight Social Scorchers. That is a very special shot. Using the ramp to good effect. No fine leg. Reaping the rewards. Tapan Bhatt on that occasion. 14 overs have been bowled. 103 for 3 are the Spotlight Social Scorchers. Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified CE and API. We have successfully retained a strong clientele. तो आनंद ठक्कर आए नए बॉलर और 10 के आसपास है रन रेट. कुल स्कोर हुआ है 103 रन 3 विकेट नुकसान पर. 14 ओवर की समाप्ति के बाद आनंद ठक्कर डालेंगे अपने नए ओवर की नई गेंद, अपना फील्ड सेटअप करते हुए. और काफ़ी जिम्मेदारी है इस वक्त नीरज बजाज के ऊपर, जो 6 रन पर कर रहे हैं. उन्हें अपने रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा. पिछले ओवर में हमने देखा एक ज़बरदस्त शॉट मारा
बैट्समैन ने उसे फाइन लेग की तरफ, सुपर फाइन लेग की तरफ मोड़ा और तेज़ी से उसे 4 रन है। थोड़ा सा ओस है मैदान पर और इस ओस का फ़ायदा उठाना होगा बैटिंग साइड को। नीरज बजाज खेल रहे हैं 6 रन पर। आनंद ठक्कर अब तक फील्ड सेट कर रहे हैं। थोड़ा दबाव है इस वक्त बैटिंग साइड पर और पवेलियन पर बैट्समैन सेटअप है जो एग्रेसिव बैटिंग करने वाले हैं। आगे चलकर पूरी तैयारी पर हैं ड्रेसिंग रूम पर। काफ़ी टाइम लगा रहे हैं आनंद ठक्कर बॉलिंग रन अप पर जाते हुए। छोटा सा रन अप है उनका। मुझे याद दिला रहे हैं अशोक मल्होत्रा की, इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आनंद ठक्कर की ये गेम फुल टॉस, ऑलमोस्ट फुल टॉस थी, लेग स्पिन गेम डाली, इसका फायदा नहीं उठा पाए। ये अच्छा मूव है बैट्समैन फील्डिंग साइड का। एक स्पिनर को ला रहे हैं, पेस बॉलर को बॉलिंग नहीं दे रहे हैं। अगली गेंद इसे बैट्समैन ने उठा दिया है, गेंद जा रही है, अंपायर का इशारा। ये छोड़ दिया, आसान सा कैच। विजय सिंह जिन्होंने 2 ओवर पहले बहुत अच्छा कैच पकड़ा था और ये आसान सा कैच छोड़ दिया। मैच पूरी तरह से घूम सकता था फील्डिंग साइड की तरफ और एक आसान सा कैच छोड़ दिया। आनंद ठक्कर की अगली गेंद, इसे फिर बैट्समैन ने घुमा है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन, यही तो चाहिए बैटिंग साइड को, यही करना होगा। हर ओवर में अब चौका और छक्का चाहिए और गेम मैच में रहना है तो हर ओवर में एक चौका छक्का चाहिए क्योंकि रन रेट अभी 10, 11, 12 के आसपास पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, जो विजय सिंह ने कैच छोड़ा। 108 3 विकेट के नुकसान पर आनंद ठक्कर ने इस ओवर में 5 रन दिए 3 गेंदों पर। तपन भट्ट जिनका स्ट्राइक रेट है 200 रन, 15 रन बनाए 7 गेंदों पर। और ये प्लेयरों पर है दारोमदार इस मैच का। आनंद की ये गेंद, इसे बैट्समैन ने मोड़ा है फाइन लेग की तरफ, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, थर्ड फॉर द थ्रो हो सकता है और ये नहीं, नाकारा है बैट्समैन ने। अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बैट्समैन के बीच में, कोई रन नहीं, 2 ही रन मिले इस ओवर बॉल में ही। अच्छी अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो मिक्सअप हो जाते थे और रन आउट होने का अच्छा चांस हो जाता था। 110 रन 3 विकेट नुकसान पर। करंट रन रेट है 7.50। आनंद तैयारी में अपने अगली ओवर में 7 रन दिए हुए 4 गेंदों पर। आनंद की ये गेंद, अच्छी गेंद, गेंद जा रही है बैट्समैन के आगे और दौड़कर 1 रन पूरा किया। 8 रन दिए, मगर मैं बताना चाहता हूं कि हर ओवर में बैटिंग साइड को 10-11 रन बनाने होंगे, स्पॉटलाइट को बनाने होंगे हर ओवर में 10 रन। तपन भट्ट खेल रहे हैं 17 रन पर। उनके ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, स्ट्राइक पर वही है, उन्हें चौके छक्के मारने होंगे। स्क्वायर कट किया है बैट्समैन ने, गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ और दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो कुल स्कोर हुआ है 112 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद। आगे का सूरत हाल देंगे जर्विस। कभी आपने सोचा
Paresh Shah to Neeraj Bajaj. 49 needed of the last 5. It's close to 10 runs and over from here, which is doable, but they're going to have to keep abreast with the asking rate here. Do the two batsmen in the middle, Neeraj Bajaj and Tapan Bhatt. Steps out, goes over the top of cover. There is long off. That is particularly wide this time round. They will pick up a couple of runs here. With 7 wickets in hand, one would back the batting side here. But the Spartans are in no way out of this game. Match is completely in the balance. Will be a single. 3 balls, 3 runs. Tapan Bhatt on strike. Tapan has been the aggressor in the partnership so far, batting at a strike rate of 200, which is really very healthy. Okay, he's got a full toss here. He swung that away on the onside. Does a decent job in the deep, does the man. Will pick up a couple of runs here, will Tapan Bhatt. So 5 runs coming off the first 4 balls. They need another 5 in the next 2 to keep up with the asking rate. Comes inside the line of the ball to access the onside. They're asking the question here. But the umpire has gone in favor of the batsman. This is a good over so far by Paresh Shah. 5 balls, 5 runs. Neeraj Bajaj coming up to have a word with Tapan. .44 needed of the last 25. Tossed up. The wicket keeper has goofed up here. It could have been a stumping opportunity. It's gone a begging. Tapan Bhatt is yet out there. This might turn out to be costly for the Spartans. You never know. We'll have to wait and watch. 16 overs have been bowled. 118 for 3 are the men in yellow. आनंद ठक्कर पहली गेंद से बैट्समैन ने घुमाया फाइन लेग की तरफ, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। यही तो चाहिए बैटिंग साइड को। पिछले ओवर में एक स्टंपिंग की चांस भी मिस की विकेट कीपर ने। 11 के रन रेट से बनाने इनको रन, और पहली गेंद पर 4 रन। मैच कहीं भी जा सकता है, इस तरफ या उस तरफ, ऊपर नीचे गेम घूम रही है। गर्मा गर्मी आ गई है मैच में। तपन भट्ट अब खेल रहे हैं 24 रन पर 13 गेंदों पर। तपन भट्ट को रहना होगा इस मैच में अंत तक, अगर स्पॉटलाइट को यह मैच जीतना है तो। काफी जिम्मेदारी है तपन भट्ट के ऊपर, दारो मदार उसके ऊपर ही है। आनंद ठक्कर की पहली गेंद पर चौका। आनंद आ रहे हैं अपने पहली, और ये फिर घुमाया बैट्समैन और ये अपील कर रहे हैं यहां पर लेग अंपायर की तरफ भी। नॉट आउट का है अंपायर ने।
नॉट आउट, बाल बाल बचे। ये रिप्ले बता रहा है नहीं, काफी बार निकल चुके थे। एक ये एक्साइटमेंट में अपील थी मगर ये नकारा है अंपायर ने। अंपायर, लेग अंपायर दोनों की तरफ अपील। आनंद की अगली गेंद, इसे मोड़ा है बैट्समैन ने मिड ऑन की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया। तो 5 रन आए 3 गेंद पर। हर ओवर में 11 की औसत से रन बनाने होंगे। 1-2 छक्के लगेंगे तो मैच में जबरदस्त मजा आ जाएगा, क्योंकि इस मैच में, इस इनिंग्स में छक्के नहीं लगे। और आपको देखा होगा जब पहले बैटिंग कराई थी उन्होंने 6 छक्के मारे थे। आनंद की गेंद, फुल टॉस, बैट्समैन ने उसे मोड़ दिया है। 6 रन के लिए फायदा उठा रहे हैं आनंद की बॉलिंग का। ये तो एक डॉली बॉलिंग थी जो डेविड गौर डालते थे कानपुर के टेस्ट मैच में। इंग्लैंड के लेफ्ट हैंड बैट्समैन जिन्होंने कपिल देव को डाला था ये फुल टॉस, और जिन्होंने कपिल देव ने उसकी बॉलिंग में 6 रन मारे थे। तो 11 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर, 129 पर 3। मैच कहां बताए कहां जा रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी उधर तो कभी इधर। आनंद की अगली गेंद, इसे कट किया है बैट्समैन ने और दौड़कर 1 रन पूरा किया। 130 3 विकेट के नुकसान पर। एक खास बात है कि बैटिंग साइड पर, स्पॉटलाइट की बैटिंग पर, कि उनके पास 7 विकेट है, उनका एडवांटेज ले सकते हैं वो लोग। आनंद अपनी आखिरी गेंद ओस है मैदान पर, उसका फायदा उठा रही है स्पॉटलाइट की टीम। ये फुल टॉस पे कन्वर्ट किया है बैट्समैन ने, गेंद जा रही है मिड विकेट की तरफ और दौड़कर 2 रन पूरे किए। ओवर थ्रो की अपेक्षा थी मगर नहीं, तो ये 17 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर हुआ है 132 3 विकेट के नुकसान पर। तपन भट्ट की बैटिंग पे कुछ करना होगा, उन्हें कुछ रंग दिखाना होगा इस मैच पर, उसके ऊपर दारोमदार है। तपन भट्ट खेल रहे 27 रनों पर 16 गेंदों पर। आगे का सूरत हाल देंगे जर्विस इंग्लिश में। कभी आपने सोचा है फोन बिल, बिजली का बिल, ईएमआई हर महीने, पर आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3 महीने में एक बार? छोड़िए, लेकिन अब कोई है जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहा है 3 महीने में नहीं, बल्कि हर महीने, और उस इंटरेस्ट पे भी मिलता है इंटरेस्ट हर महीने। पता है कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यही तो है इनकी ऑलवेज यू फर्स्ट वाली सोच। मैं तो जुड़ चुका हूं इनके साथ, अभी जुड़ जाइए ना। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। Paresh Shah to Neeraj Bajaj. Steps out, goes towards long off. Misfield will give them the boundary. Superb shot from Neeraj Bajaj. He needed a boundary under his belt. It's been a long time coming. The fieldsman going for the catch. Falls just short of him. Was a valiant effort out there in the deep, but wasn't able to stop the ball from going into the boundary. Neeraj Bajaj moves on to 22.
Sweeps. They're running the first one hard. They're coming back for the second. Will be a couple of runs added to the total. Spotlight are getting closer and closer to the target. 161 is the target. 23 needed of the last 16 balls, which is very doable. Remember, they have 7 wickets in the tank. Stepping out again, well bowled Paresh, right up there in the block hole. Yorking himself on that occasion, Neeraj Bajaj. Looking to cut 2 dot balls in a row. He is feeling the heat, is Neeraj, after those 2 dot balls. No timing whatsoever, but this might be a blessing in disguise. They're coming back for the second. Completed easily in the end. So far Paresh has bowled a decent over. 8 runs have come off it. A ball to go now in the 18th. Exactly 21 needed of 13 balls. Cuts. Finds the gap. The ball is racing away, but the fieldsman will get there. Another couple of runs. So 10 runs coming off the 18th. 142 for 3 are the Spotlight Social Scorchers, with 19 to get off the last 2. Automation is the fundamental foundation in all industry revolution. We are the foremost provider of valves for companies across industries. 2015 certified, CE and API. We have successfully retained a strong clientele. तो 142 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट और है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 19 रन। ये मैच है या पानीपत का अखाड़ा। जर्विस भी इंजॉय कर रहे हैं मैच को, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, दोनों मैच का आनंद ले रहे हैं। हम कमेंटेटर बॉक्स में इंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, मैच का दिलचस्प आनंद उठा रहे हैं। दोनों प्लेयर में रूबरू गुफ्तगू, जबरदस्त पार्टनरशिप। एक बैट्समैन 27 पर खेल रहे हैं तपन भट्ट, और दूसरा बैट्समैन नीरज बजाज खेल रहे हैं 28 रन पर। ये ओवर में अगर 10-12, ये एक निश्चित ओवर हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का। 38 ओवर तक अनडिसाइडेड मैच किस तरफ जाएगा, ये ओवर निर्धारित ओवर हो सकता है। अगर यहां पर एक विकेट गिर जाती है तो स्पार्टन मैच में
फिर से वापस आ सकती है। झुनझुनवाला जो एक काफ़ी तजुर्बेदार बॉलर है, फील्ड सेटअप करते हुए विकेट की तलाश स्पार्टन को, फील्ड का मुआवना करते हुए 142 3 विकेट के नुकसान पर 19 रन चाहिए पार। झुनझुनवाला की अगली है, इसे बैट्समैन ने बॉलर्स बैक मारा है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, बैट्समैन ने एक रन पूरा किया, दूसरे रन की तरफ आ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। झुनझुनवाला कुछ नाराज, वो नाखुश थे, दूसरा रन क्यों दिया गया। तपन भट्ट 29 पर 144 पर 3, 9.27 का रन रेट चाहिए, 7.93 का रन रेट है। पहली गेंद पर दौड़ रहा है झुनझुनवाला की दूसरी गेंद, इसे बैट्समैन ने अच्छी गेंद, डॉट बॉल, और ये वाइट बॉल का इशारा। नाराज है कुछ झुनझुनवाला, नाखुश अपने आप से। विकेट कीपर भी नाखुश की है, ना वाइट बॉल नहीं था, मगर अंपायर का फैसला जो है फाइनल है। झुनझुनवाला की अगली गेंद, इसे बैट्समैन ने घुमाया और ये कैच होने की चांसेस और कैच छोड़ दिया है। लगभग ये कैच था निश्चित, मगर छोड़ दिया और बैट्समैन ने दौड़कर दूसरा रन भी पूरा किया। यहां पर जबरदस्त उत्साह है मैन इन येलो का, ड्रेसिंग रूम से तालियों की खड़खड़ाहट। ये कैच पकड़ लेना चाहिए था, ये कैच पकड़ लेना चाहिए था। विकेट की तलाश, अगर ये विकेट गिरता था तो थोड़ा फेवर करती थी बॉलिंग साइड को ये मैच। झुनझुनवाला काफी मेहनत कर रहे हैं इस मैच में। झुनझुनवाला की एक गेंद, बैट्समैन ने दौड़ा है, एक रन के लिए पूरा किया और आना चाहेंगे दूसरा रन के लिए, और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। मैन इन येलो सिंगल्स और 2 पर ध्यान दे रहे हैं। अगर इस ओवर में एक चौका या छक्का लग जाता है तो गेंद स्पॉटलाइट की तरफ मुड़ जाएगा। 3 गेंदें और है झुनझुनवाला की। झुनझुनवाला की चौथी गेंद, और इसे मारा है और ये कैच, गजब का कैच, गजब का कैच। यही तो इंतजार था फील्डिंग साइड को, इसी का इंतजार था। झुनझुनवाला गए कांग्रेचुलेट करने अपने फील्डर को, जबरदस्त कैच पकड़ा है वहां पर, ये पार्टनरशिप को तोड़ा है। भैया ये मैच है क्या, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा कमेंटेटर बॉक्स में। अच्छी पारी खेलकर आउट हुए, 12 रन चाहिए 9 गेंदों पर। अब नया बैट्समैन आएगा तो उसे रंग जमाने में टाइम लगेगा, उसे 1-2 बॉल लगेंगे। अमित कोहली आए नए बैट्समैन, जिन्होंने अच्छा कैच पकड़ा था। अमित कोहली आ रहे हैं मैदान पर। नौ रन की रन रेट, बचे हुए 9 गेंद में 12 रन चाहिए। कुल स्कोर हुआ है 149, 4 विकेट के नुकसान पर। रविंद्र झुनझुनवाला ने 3 विकेट लिए हैं। अगर उम्मीद करते हैं अगर ये एक ओवर में 1 विकेट ले लेगा तो और मैच दिलचस्प हो जाएगा। स्ट्राइक पर है नए बैट्समैन, नीरज बजाज है नॉन स्ट्राइकर पर, उसे आखिरी ओवर खेलना होगा। 28 रन पर खेल रहे हैं। अमित कोहली सामना करेंगे, इसे घुमाया है कवर्स की तरफ, बैट्समैन ने सिर्फ 1 ही रन लिया। अब क्या करना होगा, आखिरी गेंद पर 1 रन लेना होगा, उसे स्ट्राइक रखना होगा। अपने आप अगर स्ट्राइक देते हैं आखिरी ओवर में तो मैच जो है बैटिंग साइड की तरफ एडवांटेज हो जाएगा। नीरज बजाज खेल रहे हैं 28 रन पर 22 गेंदों पर।
अमित कोहली ने अपना खाता खोला। 150 4 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद। झुनझुनवाला फील्ड का मुआयना करते हुए, ड्यू तो है, ओस तो है मैदान पर। झुनझुनवाला कुछ गंभीर विचार करते हुए इस गेंद डालने के बाद, ये गेंद इसे बैट्समैन ने मारा है मिड ऑफ की तरफ, 1 रन पूरा किया है और दूसरा रन नहीं लेना चाहेंगे। यही तो समझदारी का काम किया है, समझदारी का काम किया नीरज बजाज ने। तो इस 1 रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 151। 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 10 रन चाहिए और मैच का आखिरी ओवर का सूरत हाल देंगे जर्विस, जो मैच को बताएंगे कि मैच किस तरफ मुड़ने वाला है। Sachin Sangvi being entrusted with the responsibility to bowl the final over of the innings. Exactly 10 runs needed. All 3 results possible here. Neeraj Bajaj will be on strike, batting on 29 of just 23 balls. Amit Kohli has just walked into bat. Neeraj will try and finish it off in the first 3 balls itself. You don't want to go into the last 3 balls. He is the set batsman. The responsibility will be on his shoulders to try and take his side across the finishing line. This could be curtains. It ends up in a single. What could have been a run out. They go through for a leg by Amit Kohli has played some superb knocks for his side in the past. He is an experienced campaigner. I'm waiting to see his approach year after. 9 needed of the last 5. It's gone in the air. Cover will not come close to it. I think he expected the bowler to get there. The bowler expected him to get there. Neither of them called really. And probably what could have been a wicket ends up in a single. Now this could prove to be really costly. A wicket here would have helped the Spartans big time. But the spotlight social Scorchers get away with it. Sachin Sangvi to Neeraj Bajaj. Steps out. Goes over the top. How well has he connected on this one? It's gone the distance. It has gone for 6. There you go. The umpire signal confirms it that it's crossed the ropes. Superb shot from Neeraj Bajaj. Stepping out. Getting close to the pitch of the ball. Making some room for himself. And going over long off. Clearing long off comfortably in the end.
was a quality strike. Leaves them with only 2 runs to get now. 3 balls in hand. Sachin Sanghvi under a lot of pressure here. So are the Spartans with that. Sachin Sanghvi to Neeraj Bajaj. Ran the first one and they'll settle down for the single. So it's up to Amit Kohli to finish things off here. He has a couple of balls, 1 run to get. The scores are tied at the moment. Spotlight Social Scorchers have managed to reach the total. But can they get the target? They only need a run from here. Amit Kohli will be on strike. Sachin Sanghvi with the ball in hand. Where will he bowl this one? The field's coming up as it should. Oh yes, we've had a nail biter out here at the Somaya cricket ground. This is exactly why we watch cricket, why the players play cricket, to have these kind of nail biting encounters. Spotlight Social Scorchers need only a run. He's gone down the ground. That'll be it. The men in yellow do it. With a ball to spare, win the match by 6 wickets. Well done to the men in yellow. They have done a splendid job to take their side across victorious. I believe this is their 4th win in a row. Men in blue would be disappointed with themselves, but they played good cricket as well. The match has gone down to the wire rather. It was a well fought match all throughout. It was only in the last 2 deliveries that one could say that Spotlight should get across the line. It was anybody's match to be had all throughout the innings and the match. That's how well these 2 teams have fought. Cricket has been the winner today. That's how well these 2 teams have gelled together and played a phenomenal match of cricket overall. Spotlight Social Scorchers getting across the line with 6 wickets in hand. Quality stuff from the men in yellow. Men in blue as well have done a very good job for their side. Now this is what happened. Spartans, they won the toss, elected to bat first. They managed 160 for 6. In reply, the Spotlight, thanks to Anish Vijaykar's 52 of just 33 balls, opening the innings for his side, giving his side a very good start. Neeraj Bajaj and Tapan Bhatt take a bow. Both of them batted really well towards the end. A good partnership of well over 50 between these two enabled the Spotlight Social Scorchers to get close to the total, and eventually Neeraj Bajaj stayed not out on 36, with Amit Kohli getting the winning runs. Ravindra Jhunjhunwala bowled really well in his 4 overs, went at exactly 6 runs per over and picked up 3 wickets. Eventually, the Spotlight Social Scorchers winning the match by 6 wickets and sealing their deal and going into the Platinum Finals, if I'm not wrong. I'll see you at the presentation ceremony in 5 to 10 minutes from now. Do stay tuned in.
It was the Spartans. They won the toss, elected to bat first, managed to put up 160 for 6. In reply, the Spotlight Social Scorchers getting across the line with 6 wickets to spare and a ball to come along with that. Well, in my presentation party, we have a load of awards to give away. We'll start off firstly with the catch of the match. And I would like to request Mr. Aditya Singh from Galaxy Freight to please come up here. Mr. Aditya Singh from Galaxy Freight, if you could please come up here and present the award. And any guesses? The catch of the match. It goes to Amit Kohli for that wonderful catch that he took. Yeah, it was Aditya Singh itself. Come to him. Come to my left. Well done, Amit. Very well done. He did drop one catch of Vijay Singh, but he made up thereafter, didn't he? Well, now it's rewarding the best fielder of the match. I would like to request Mr. Amit Kohli this time to come up to reward the best fielder of the match. And any guesses for the best fielder of the match? It goes to Aryan Bhatia this time round. Well done, Aryan Bhatia. Very well done, the best fielder of the match. Amit Kohli awarding the best fielder of the match to Aryan Bhatia. Well done, young man. Now the entertainer of the match. I would like to request Mr. Sachin. Mr. Sachin from Cricket Graph, if you could please come up here. Okay, Mr. Sachin Sangvi, we would like to request you to please come up here to go ahead and give the award of the entertainer of the match. Any guesses on the entertainer of the match? It goes to Neeraj Bajaj. Well done, Neeraj. Well done, Abhishek. Neeraj Bajaj, you need not be embarrassed. You've done a terrific job for your side, helping them get across the line with the bat in hand, staying not out on 36. He's done a top job for his side overall. Ends up being the entertainer of the match. Can I have Mr. Anand Thakkar? Mr. Anand Thakkar, if you could please come up here. Versatile, handing over the best over of the match. The best over of the match goes to Abhishek Zaveri for his second over where he gave away only 1 run and picked up a wicket to go along with that. Has figures of 4 overs, has given away only 18 runs and has picked up a wicket to go along with that. Well done, Abhishek Zaveri. Very well done. Now can I have Vignesh to please come up here? Mr. Vignesh, are you here? Yeah. Vignesh is from Alpha Jolly Cricket Arena. He would be handing over the shot of the match. Any guesses on the shot of the match? There were many good shots played, but eventually it goes to Mr. Vijay Singh for tonking one big ball out of the ground. Well done, Vijay. Splendid job with the bat all throughout the tournament for his side. Got run out unfortunately today, but has done a phenomenal job for his side. Right, the turning point of the match. Can I have Mr. Bhaumik Vaidya here? Bhaumik Vaidya, please come up. It's Niton Valve Private Limited that will be handing over the turning point of the match. And the turning point of the match goes to Amit Nayyar for the wicket of Aditya Singh. The half-centurion Aditya Singh. Well done, well bowled, Amit Nayyar. Coming at the right time. Aditya's wicket did cost the Spartans 10 to 15 runs easily in the end, which enabled the Spotlight Social Scorchers to get across the line eventually.
Can I have Abhishek Zaveri out here? Mr. Abhishek Zaveri, if you could please come up here. And it is going to be Z Sports Tech awarding the highest batting strike rate of the match. And there are no guesses for this because we all know that Aditya Singh played a blinder. 184 the strike rate. 184.85 to be precise. Well played, Aditya Singh. Superb knock. Very well done, Aditya. Now can I have Mr. Chirag out here? Chirag is from IDFC and IDFC is awarding the top performer in the batting unit. And once again, it is Aditya Singh for his 61 of 33 balls. Well played, Aditya. He will receive the award from Mr. Chirag from IDFC. Our top performer in the batting unit. Now may I have Mr. Ajay out here, please? Is Mr. Ajay out here? It's going to be Uptown that will be awarding the top performer in the bowling department. Any guesses who's the best bowler of the match? Well, it goes to Ravindra Jhunjhunwala for his figures of 4 overs, 24 runs and picking up 3 wickets to go along with that. Well bowled, Ravindra Jhunjhunwala. Top stuff with the ball. Very well done. Has bowled his heart out. Clearly the top performer in the bowling department. And now, before awarding the man of the match, I would like to request the captain of Spartans, Mr. Siddharth Chawda. Are you out here? Mr. Siddharth Chawda, could you come up to have a word with us? Siddharth, was a well-closed, contested match. When you see the end result, I don't think it hurts that much because you all played really well. Yeah, it was a close game, but I think we could have had 10 runs more and we could have defended the total. End of the day, I think brilliant performance from the Spotlight guys and well played Addy also for his 61. Tough match, close match, but I think they deserve to win. At the end of the day, when you look at the match overall, I think cricket was the winner. You can't really put across and say that the Spotlight were the better team on the given night. Yes, they inched closer, they held the nerve towards the end, they went across the line, but I think overall was a good cricket match. Absolutely, and all the matches in this tournament have been really good, have been close fought and have been really close towards the end. Some of them we've had a super over also. So all in all, yes, cricket is a winner. Yes. All the very best for the matches to come. Thank you. Thank you. Well, now may I call upon Mr. Abhishek Zaveri from the Spotlight Social Scorchers to have a word with us, please. Abhishek, you lost the toss. You got to do what you wanted to do. Eventually, all's well that ends well. You got across the line victorious. Yes, Happy. This is a fantastic outcome for us. We've played 4 matches. We've had all kinds of different scenarios. It was a tough chase in the end. The opposition didn't make it easy, but I think we had a very strong batting lineup. And in the end, we managed to chase it. And it's 4 out of 4. Top stuff, guys. Well done to the Spotlight. Yeah, 4 out of 4. Undoubtedly, you'll are champions. You'll enter the platinum segment in the finale. You'll have done a fabulous job. I mean, as you said, you have a very strong batting lineup, but you'll restricted them to 160. They were eyeing 180. What do you have to say about that? Well, I think that the bowlers bowled fantastically, but we need to work a little bit on our catching. We dropped a good 5-6 catches. Had we not done that, we would have restricted them to maybe 120, 130, and we could have chased this down with ease. So our bowling is doing really well. Our batting is doing fantastically. We need to work a little bit on the fielding, but I think we're good and ready to face anybody in the finals. All the very best in the finale. Thank you very much. Well, well done to the Spotlight Social Scorchers. Well done to their captain as well.
Now finally rewarding the man of the match, the man who turned the match on its head with the bat in hand. The opener from the Spotlight Social Scorchers, 52 of 33 balls. Anish Vijaykar, you are the man of the match. Bowled 4 overs, gave away only 20 runs and picked up a wicket as well to go along with that. So he contributed in both departments. I would like to request Mr. Amit Nayyar to please come over to hand over the man of the match. Mr. Amit Nayyar, are you here? Mr. Amit Nayyar, he is for Marshalls. If I'm not wrong, okay, fine. It's Marshalls who's presenting the award. They get, or rather, Mr. Anish Vijaykar gets a check of 10,000 rupees to go along with that. He deserves a huge round of applause, ladies and gentlemen. He is our man of the match for this evening. Well played, Anish Vijaykar. Very well played. Gets a memento, gets a check of 10,000. You couldn't have asked for anything better than that. Well played, Anish. Very well played. Top stuff. Top knock from a fine batsman. Well, ladies and gentlemen, that concludes our presentation ceremony for tonight. We're not done in the tournament because we're bringing you a few other matches that come to you live. Tomorrow, we will see you once again at 7 o'clock in the evening. Before the toss will be taking place at 6:30. So do stay tuned until then. I shall see you tomorrow. Till then, take care. Have a great night ahead and see you tomorrow. Thank you so much for having joined us.